मीठा मीठा सही लग रहा है। हाँ आप देखो, मैं इतना सारा थोड़ी खाती। Sir, you can start. Welcome, student. So today we see the topic disorder of the ear. In previous time lecture, we saw the disorder of the eyes. So today we'll see the disorder of the ear. So पहले देखेंगे anatomy क्या है. See is a we all know what is the structure of this thing. So we'll revise this thing. Okay, this is outer ear, आपका middle ear है और आपका inner ear है. Okay, तो उसके नाम आप देख लो. To be very easy to understand also. Okay, this will be irregular lobes. जो बाहर आउटर पार्ट होता है, जो मैक्सिमम टाइम पे फीमेल यूज करते हैं ना फॉर यूजिंग सम इयरिंग्स के लिए, इसको बोलते हैं irregular lobes. Okay, then we'll go to here, same thing here. So we'll have a helix. ये क्या हमारा, इसको बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं. इसके अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं स्केफा. Okay, then will be a concha. I'm not going over detail, which are important thing. And then tingular fossa. So remember this thing, earlobe. Earlobe बहुत important part है. जो बहुत टाइम हम earlobe यूज करते हैं for giving the pain to the patient, like CPR patient में हम देते हैं ना ये pain, उस टाइम यूज करते हैं. और we want to see the response, like हमने बात की थी GCS के अंदर, तो स्केल के अंदर पेन स्टिमुलाई. सो फॉर earlobe में पेन देते हैं. ओके, उसका क्या नाम क्या है, earlobe और auricular lobe also will be same. Then we'll go to the other part in the outer layer. We have cartilage, we have temporal muscle and temporal bone. Okay, temporal muscle and temporal bone. Okay, so will you please क्या है, cartilage. Then now to go to middle ear. Middle में क्या है, important part, tympanic membrane, और इसको बोलते हैं ear drum. Okay, then उसके अलावा जो आपके मिडल और आउटर ईयर के बीच में एक आता है, उसको बोलते हैं ईयर कैनाल. क्या बोलेंगे उसको, ईयर कैनाल, जहां से हमारा एयर जाता है टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. देन अब टिम्पेनिक में जाने के बाद ये हमारा मेलियस में जाके साउंड प्रोड्यूस करेगा और इनस के अंदर हमारा परफॉर्म करेगा. स्टेप इज, आई होप यू नो द स्मॉलेस्ट बोन विल बी है. ओके, उसके अंदर की कैविटी क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक कैविटी. देन वी हैव कोकिला, वो विल बी द राउंडेड शेप. ओके, एंड देन कोकिलर नाउस एंड स्टूडेंट ट्यूब विल बी इनर ट्यूब, इनर ईयर. तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर है. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, समटाइम आता है कि स्मॉलेस्ट बोन, सो रिमेंबर स्टेप इज. ओके, देन बात करें हम स्ट्रक्चर में, ये आपका कार्टिलेज वगैरह, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स और मेलियस वॉल शुड बी नो. सो विल डिस्कस टू टॉपिक हियर इन ईयर. ओटाइटिस एक्सटर्ना इज वेरी टॉपिकल. फर्स्ट, it is a inflammation of the external ear. So I hope you understand, external part of ear means outer part of ear. Okay, so क्या inflammation होगा, reddish color होगा. Okay, so it's called otitis externa. Swimmer ear, sorry, swimmer ear भी बोलते हैं इसको. क्यों होता है, because fungi और bacteria infection. जब water remain in the trap in the ear canal, जब ear canal दिख रही है आपको, उस ear canal के अंदर most of time, long time के लिए water रह जाए, जो हमारा extremal ऑटोस्टिक मेटास है ना, जो इसको ईयर कैनाल, उसके अंदर वाटर रह जाए व्हाइल स्विमिंग, मोस्ट ऑफ द स्विमिंग टाइम पे. ओके, और दिस टाइप विल बी अ प्रॉब्लम. सेकंड क्या है उसका, हार्श क्लीनिंग ऑफ द ईयर कैनाल. ये कैनाल बहुत रफली क्लीन कर रहे हो दैट टाइम. ट्रॉमा टू द ईयर कैनाल, ड्राई टू द ईयर कैनाल. ओके, देन फॉरेन बॉडी गो टू द ईयर कैनाल. सो देयर सर्टेन रीजन है, ओके, व्हिच विल बी कॉज, विल बी टू द पेशेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. इसका सिंपल थिंग याद रखना, ये क्या है, ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब आइटिस इन्फ्लेमेशन. ओके, सो ओके, एक्सटर्ना मींस एक्सटर्नल पार्ट. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर. सी विल कंफ्यूज मीनिंग की वजह से बोल रहा हूं, सिंपल याद रखना. ओटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, ओटाइटिस तो याद रखना बात ईयर की हो रही है. तो हम बात करेंगे अगर तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्ना मींस एक्सटर्नल कैनाल. उसमें क्या होता है, फंगाई या बैक्टीरिया हो जाए तो, या कुछ वाटर remain in the ear canal, rough cleaning, trauma to the ear canal by being injury to trauma, or dry ear canal skin, some dryness of skin will be here, some problem with the skin disorder तब होगा. और कुछ foreign body चली जाए ear के अंदर, while cleaning ear, while examination, or while doing something, also will be something go to ear canal, also can problem. Apart from the eczema, ना हमने सब कुछ समझी यहाँ पर कि ear canal में problem होगी, but now what is eczema? क्योंकि ये सब कुछ डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पर. एक्जिमा आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विल बी कम इन स्किन डिसऑर्डर. ओके, एक्जिमा क्या है, एक्जिमा इज अ इचिंग
इज इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। तो आपके ईयर कैनाल के अंदर इचिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको बोलेंगे एक्जिमा बोलेंगे। ओके, नाउ व्हाट आर साइन सिम्टम? will be a redness, already told inflammation or redness hoga, itching because eczema, pain because water is inside there, so pain will be have, और drainage है because of water or something inside there, तो वो आपका water तो drainage भी करेगा, डिस्कशन में स्टार्टिंग में इन्फ्लेमेशन बोला ही है तो swelling हो गई, और because of this thing conductive loss, because हमारे ईयर कैनाल के अंदर हमारा क्या जाना चाहिए था, यहाँ पर जाना चाहिए एयर, और बिकॉज सब रीजन यहाँ पर क्या वाटर है, तो इसलिए वाटर है तो एयर में जाने में टाइम लगेगा, टिम्पनी मेम्ब्रेन में जाके वो टाइम लग गया प्रॉपर्ली, तो आपका जो कंडक्शन सिस्टम हियरिंग का वो भी लॉस हो सकता है। ओके, सो हम क्या बात कर रहे हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना की, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, हमने कोज की बात की, हमने बात की सारे सिम्टम की। नाउ विल गो फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक देंगे या एंटी फंगल देंगे ईयर ड्रॉप में या ओरल के अंदर, और सम टाइम विल गिव द कॉर्टिकोस्टेरॉइड आल्सो बिकॉज़ ऑफ वी वांट टू रिलीज द स्वेलिंग। ओके, स्वेलिंग रिलीज करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईयर ड्रॉप देते हैं और रिलीज द स्वेलिंग। वन वी गो फॉर पेन किलर मेडिसिन। ओके, सो विल गिव एनाल्जेसिक ड्रग आल्सो टू द पेशेंट। सो दिस इज अबाउट सिंपल टॉपिक ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना और सीवियर ईयर। नेक्स्ट टॉपिक इज ओटाइटिस मीडिया। ओके, ओटाइटिस मीडिया इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीडिया मींस मिडल, ओटाइटिस मीडिया इज अ मिडल। ओके, सो क्या बोलते हैं हम ओटाइटिस मीडिया? सो इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द inflammation of the inner ear. Okay, so inflammation of inner ear means otitis media, और external means inflammation of the external area. Okay, so आपको याद रखना पड़ेगा कि something will be in the patient which are otitis media means medial part, E means external part. So itis में inflammation already मैंने बोल दिया, ओटाइटिस तो ये हमने ओटाइटिस ईयर की बात कर रहे हैं, और आइटिस इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं आगे। So inflammation of middle ear called otitis media or middle ear infection। ये सिंपल क्वेश्चन आता है। otitis media means infection of the inner ear, middle ear, outer ear, or all of the above. So remember, it's a middle ear infection. Okay, now what are the causes? Cold, sore throat, or respiratory infection. This all can lead to infection to the middle ear. इसके दो टाइप हैं, AOM और CSM के आंसर से, और acute otitis media or maybe chronic otitis media or otitis media with effusion. Okay, so there are mainly two will be here. Okay, now what is sign symptom? Obviously middle ear, so आपको पिक्चर याद रखनी पड़ेगी ईयर की एनाटॉमी की कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, सो मीनिंग हमने ईयर में मिडल ईयर में क्या आता है, मिडल ईयर में क्या आता है, will be have tympanic membrane, all these things. Okay, you see middle ear we have tympanic membrane, then tympanic cavity, all these things will be have, then will be have a canal also, then will be a stapes, incus, all will be inside will be have in the ear. So you to understand कि यहाँ पर आपका इस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या होगा, uneasy irritability। आप बिकॉज ईयर का काम ओनली हियरिंग का नहीं है, बैलेंस मेंटेन करने का भी काम है, तो इरिटेबिलिटी भी करेगा, difficulty in sleeping because painful, tugging. Okay, so tugging also because will be a what is tugging here? See, is a something is very important thing here. The patient will be a tugging symptom. Now, tugging meaning of that, the while patient will be have a okay, sorry. When tugging, the symptom will be the patient will be not able to do proper, able to hear properly. So like ear pulling, someone pulling the ear is a patient को feel होगा. So it's like a tugging will be feel. Then because infection, patient what have, patient will be have a fever. Then fluid discharge also can occur. Loss of balancing because I told you कि ear का इतना ही काम नहीं है कि only आपका इसे ये इतना काम नहीं ओनली क्या हियरिंग काम करे, बट बैलेंसिंग काम भी करता है। डिफिकल्टी इन हियरिंग, ईयर पेन, नोजिया वोमिटिंग, डायरिया, डिक्रीज एपेटाइट एंड कंजेशन। ओके, इन एग्जाम क्वेश्चन आता है, नाउ पेशेंट हैव व्हाट, पेशेंट हैव नोजिया वोमिटिंग एंड ईयर पेन, सो व्हाट इज कंडीशन? रिमेंबर नोजिया वोमिटिंग सिम्टम और साथ में आपके पेशेंट को ईयर पेन, मिडल ईयर इन्फेक्शन भी होता है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम देम लाइक tugging symptom, fever symptom are will be not able to understand, but the patient have nausea, vomiting along with the ear pain symptom always in the otitis media. Please make sure. Okay, question जब आ जाता है so easily याद रखना. Okay,
बिकॉज ईयर का काम बैलेंसिंग काम भी है, तो अगर आपका इनर मिडल ईयर आपका इन्फ्लेट हो चुका है और इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो इज आल्सो कैन लॉस. नाउ हाउ डायग्नोस? वी गो फॉर ओटोस्कोप and tympanometry. Okay, so by this thing we understood कि infection otoscope में दिख जाएगा infection मिडिल ईयर का है, and tympanometry के अंदर जाएगा कि कुछ tympani membrane में proper function नहीं कर पा रहा है. So infection है, so obviously we go for antibiotic medicine, maybe mouth, ear drop जो भी है आपका, and we'll go for medication and myectomy. If we require surgery also we can go for surgery. Okay, this is about the otitis media. So हमने क्या बात की? Otitis extrema, otitis media. Now हम बात करेंगे next is a otitis. So infection of the inner ear. So we'll say labyrinthitis. LABRINTS means inflammation of part of inner ear. तो अब इसमें क्या होगा? आपका eighth canal now क्या होती है? Will be inflammation. Okay. So what happen? There will be have a eighth canal now. In this will be have a eighth canal will be have inflammation. So we are now talking. we हमने बात की, पहले बात की external ear की, फिर हमने बात की मिडल की, फिर हम बात करेंगे इनर एक्सटर्नल मिडल हमारा खत्म हो गया. ओटाइटिस मीडिया दोनों आते हैं, एक्सट्रीमा होता है और एक एक्सट्रीमा होता है ओटाइटिस मीडिया. नाउ हम बात करेंगे लेबिनेटिस. ओके, लेबिनेटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनर ईयर. क्या होता है उसमें? जो आपका एट्थ कैनल नर्व है विल बी अफेक्टेड. नाउ एट्थ कैनल का फंक्शन पता है हमको, उसका मेन फंक्शन क्या है हमारा? हियरिंग लॉस. हियरिंग विल बी इंपॉर्टेंट. दिस विल बी कैन कॉज प्रॉब्लम टू हियरिंग लॉस कैन अकर एंड साइमल्टेनियसली अदर सिम्पटम भी हो सकते हैं. ओके, अभी ये क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ वार्म प्रेशर. जो बाहर का आपका प्रेशर वार्म प्रेशर हो और आप अपराइट पोजीशन में प्रॉपर्ली नहीं हो रहे और सॉल्टी वाटर गार्गलिंग टाइम पे, दिस कैन कॉज द प्रॉब्लम टू द पेशेंट. उसके अलावा सम वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आल्सो कैन डू दिस थिंग्स. ओके, नाउ how to treat? Simple thing, we'll go for antifungal antibiotic treatment and we can do the treatment. Okay, so it's about the simple about the ear topic. Now we'll go to the question बात करेंगे हम किसकी? question asked in ENT. So we can ask question like examination of the external ear or in tympanic membrane, which instrument will be used? Otoscope, ophthalmoscope, proctoscope या tuning fork? One simple question है. Examination of the external ear and tympanic membrane, which instrument will be used? Otoscope, ophthalmoscope, proctoscope or tuning fork? So answer will be simple thing, otoscope, because otoscope will be used in the ear. Ophthalmoscope will be used for the ophthalmic or eye. Otoscope is not usable, will be used for retinal, and tuning fork will be also for tuning fork will be used for hearing test but not visualization. Okay, so ophthalmoscope will be there. Next question, how to hold pinna in children young than 3-year-old age while observing ear canal? मतलब पेशेंट का वो ईयर पिन्ना जो एक्सटर्नल बात की थी ना, जहां पर ईयर कैनाल होता है, उसको होल्ड करना है और ऑब्जर्व करना है. जो अगर 3 ईयर का ओल्ड है पेशेंट, आप उसमें कैसे चेक करोगे? पुलिंग द पिन्ना डाउन एंड बैक, पुलिंग द पिन्ना अप एंड बैक, पुलिंग पिन्ना बैक, या बोथ ए एंड बी? सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ईयर आपको अगर ईयर एग्जामिनेशन करना है आउटर रेयर का, और वी वांट टू सी बाय द ऑब्जर्वेशन इन चाइल्ड, नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली एडल्ट हम पुलिंग पिन्ना, जो आपका ईयर पिन्ना को पुल करते हैं और डाउन करके बैक करते हैं. ये नॉर्मल होता है किसके अंदर? एडल्ट के अंदर. बट इन चाइल्ड के अंदर क्या करेंगे? हम पिन्ना को पहले करेंगे डाउन करेंगे, बैक करेंगे, और साथ में उसको अप करेंगे और बैक करेंगे, बिकॉज उसका एनाटॉमी तो डिफरेंट होता है. सी आई एम क्लियर द टू थिंग हियर. In the adult patient, while want to observe the ear, will pull ear pinna down and back. Okay. In children, will do both thing. Down भी करेंगे, up करेंगे, and will go back. Okay, simple answer. Now, method of choice to remove the ear wax. Simple question आता है. आपके पेशेंट के अंदर ear wax ज्यादा हो चुका है, so how to remove? How you will remove the ear wax? With a mineral oil, with a cotton swab, with a normal saline irrigation, or warm normal saline irrigation, or otoscope?
अगर पेशेंट के ईयर में से आपको ईयर वैक्स निकालना है तो क्या यूज करोगे? मिनरल ऑयल यूज करोगे, कॉटन स्वैब यूज करोगे, वार्म एनएस इरिगेशन करोगे या ऑटोस्कोप करोगे? ऑब्वियसली मिनरल ऑयल तो ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज ऑयली रहेगा, सो ईयर वैक्स कैन गो इनसाइड, सो वी कैन नॉट यूज दैट. बट कॉटन स्वैब आल्सो इज नॉट एप्लीकेबल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट विल प्रैक्टिस, हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना कॉटन से क्लीन करते हैं ईयर वैक्स, वो रॉन्ग टेक्निक है. सो मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में कॉटन स्वैब पे टिक कर देते हैं. याद रखना, कॉटन स्वैब से क्लीन करने वाला तरीका रॉन्ग है. ओके, ऑटोस्कोप तो है ही नहीं, विजुअलाइजेशन. तो क्लीनिंग में क्या करेंगे हम? वार्म एनएस इरिगेशन, हम वार्म नॉर्मल सा इरिगेशन करेंगे तो ईयर वैक्स कैन बी रिमूव. दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट यूज्ड to check the whether air conduction or bone conduction is more. So क्या करेंगे हम? एलन टेस्ट, वेबर टेस्ट, रिनन टेस्ट या रोमबर्ग टेस्ट. Test will be used to check whether air conduction or bone conduction are from more. So क्या करेंगे हम? एलन टेस्ट करेंगे कि वेबर टेस्ट करेंगे कि हम करेंगे रिनन टेस्ट करेंगे या रोमबर्ग टेस्ट करेंगे? नाउ एलन टेस्ट तो पता है हमको. एलन टेस्ट विल बी क्या करते हैं? एलन टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर एबीजी. सो एलन टेस्ट का नाम खत्म हो गया हमारा. अब वेबर, रिनर और रोमबर्ग की बात करें तो रिनर में क्या करते हैं? रिनर टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर हियरिंग लॉस बाय कंपेयरिंग द कंडक्शन ऑफ बोन कंडक्शन. हियरिंग क्या करते हैं हम? बोन कंडक्शन यूज करते हैं. नाउ वेबर टेस्ट क्या करते हैं हम? ए कंडक्शन के लिए. ओके, और रोमबर्ग टेस्ट क्या है हमारा? सी ऑल आर द मेथड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन. ये सारे आपके जो टेस्ट हैं वो उसके लिए ही हैं. विल बी यूज फॉर द ईयर कंडक्शन, ईयर का साउंड के लिए. रोमबर्ग टेस्ट क्या है? विल बी यूज रिक्वायर द प्रॉपर्ली. यहाँ पे क्या करते हैं हम? जो आपका लॉस ऑफ मोटर कंडक्शन है, जो अटेक्सिया हो रहा है, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन की वजह से एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को चेक करने के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे? एलन तो हट गया हमारा. ओके, रोमबर्ग जो हमारा रोमबर्ग टेस्ट है वो भी हट गया कि रोमबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं? कोडिंग टेस्ट के लिए. तो वेबर और रिनर टेस्ट में क्या है? वेबर और रिनर टेस्ट में क्या है? वेबर टेस्ट आल्सो ए कंडक्शन के लिए काम आता है. ओके, बट यहाँ पर हमको क्या करना है? बोन कंडक्शन. तो बोन कौन सा टेस्ट है? रिनन टेस्ट. तो याद रखना, एलन टेस्ट विल बी एबीजी, वेबर टेस्ट फॉर एयर कंडक्शन, रिनन टेस्ट फॉर बोन कंडक्शन एंड रोमबर्ग टेस्ट फॉर मोटर कोऑर्डिनेशन. फिर से रिपीट करता हूं मैं. एलन टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर व्हाट? एलन टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर ABG, Weber test will be used for air conduction, Renan test for bone conduction, and Romberg test for the motor function, motor coordination. So these are the tests. ये क्वेश्चन बुक में क्या सकता है? कुछ भी कि which are will be used for motor coordination. तो ये चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में चार क्वेश्चन can be clear this thing. Now next question will be here. Clinical manifestation of the Meniere's disease. Clinical manifestation मतलब sign symptom of the Meniere's disease. Vertigo, deafness, tinnitus or all of the above. तो पहले हम पता होना चाहिए what is Meniere's disease? Is a infection of the middle ear. Okay, तो उसमें क्या होगा? उसमें symptom vertigo होगा obviously क्योंकि balancing problem कर देगा. Tinnitus भी होने वाला है. Okay, and deafness भी होगा. तो आंसर क्या हो गया आपका? All of the above is the answer in the question. Next question, tympanosclerosis also known as myelofibrosis, Meniere's disease, otosclerosis या CSOM. ओके, सो आपका क्वेश्चन क्या है कि टिप्लोसिस को सामने क्या बोलते हैं? अदर नेम क्या है? तो भी ऑटोस्क्लेरोसिस तो है ही नहीं. CSM तो ओटाइटिस मिलेगा टाइप हो गया, ये भी नहीं है. Meniere's disease अगर डिस्क्रिमिनेशन हो गई तो क्या रह गया? Myelofibrosis also is a one answer is there. So same, this is simple question asked in exam. Okay, one question see the most common complaint patient with the inner infection. अगर patient को inner ear infection है तो commonest sign symptom क्या होगा? Hearing loss, bursting of ear, pruritus या tinnitus. तो आंसर भी द tinnitus. ओके, जब आपका इनर ईयर में इंफेक्शन है तो tinnitus होगा. मिडिल ईयर में इंफेक्शन है तो कॉमन सिम्टम हियरिंग लॉस होगा, और अगर आउटर ईयर में है तो पेन होगा. फिर रिपीट करता हूं,
external ear and hello, 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 hello. Sir, you are audible. Is coming between. Students, Okay. Smruti, mute your mic, please. Sorry. Okay, so here what I am saying here, now question can come in exam. Ki patient have a infection in a ear, so will come external ear, so pain. Inner ear, tinnitus. Middle ear, what will be infection? They will be have a hearing loss. So ये question exam में आता है. Okay, see yes, small topic, but so many questions can come in exam. So this is about ENT ear. Okay, now we'll go for next topic, disorder of the urinary system. और यूनिटेक. ओके, फर्स्ट विल गो फॉर यूटीआई, समथिंग यूनिटेक. सो उसके पहले हमको देना पड़ेगा एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. एनाटॉमी सिस्टम क्या है सबसे पहले देखेंगे हम, इसके बारे में आगे बात करेंगे. नेक्स्ट we'll discuss the one by one disease condition. Now very important thing of the anatomy, because हमको anatomy याद रखना क्यों important है, because हमको जो भी आगे पढ़ने वाले हैं all thing will be related to anatomy. If you know anatomy, then we can understand what will be the abnormalities. So we have kidney, right kidney, left kidney. In kidney you have renal tubules, you will be have nephrons, we all these things will be have. Then we have ureters, then we have bladder, will be urethra, prostate, and what are the genital organ will be have. Okay, this is about a simple anatomy of these things. I'm not going more detail because already in anatomy will be covered. So now we'll go for first topic. First will be cystitis. First will be the cystitis. So what is cystitis? Is the inflammation. It is inflammation of the bladder to the bacterial invasion and common in the female. So simple thing, itis. Itis is a inflammation. Itis से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? Inflammation की बात कर रहे हैं. तो आपका जो urinary tract infection है, will be is a part of the cystitis. So इसमें क्या होने वाला? पेशेंट के अंदर पेशेंट में inflammation in the bladder. Okay, and most common will be here in female. So remember this thing. This question can ask in exam. Who is the commonest will be have an infection of cystitis? So X will be female. What is the meaning of that? The bacterial infection. Now, what are the causes? Include like staging of urine. Now, urine will remain more time. अगर आपके ब्लैडर में urine more time, sometime patient will not pass urine, na that time. And obstruction while sexual intercourse. Okay, something I will be the typing error. Remember this thing. There will be a urine obstruction and problem with the obstruction while sexual intercourse and high estrogen. Okay, so what will I want to say here? In the patient will be have a what other important thing here? There will be have a urine will be remain more. अगर पेशेंट के अंदर यूरिन ज्यादा टाइम पे रह जाए तब, अगर will be a sexual intercourse time will be a problem, infection this time, and high estrogen. These all are the reason which can cause to the cystitis. Next thing now is the inflammation. So obviously now we are discussing about renal. So क्या होगा? The pain will be the answer. The pain, tenderness, and obviously urine remain more time. The frequency of urine will be increased. And will be a urination and pain while urination, because patient will be have not pass urine for longer duration. So the pain will feel while urination. Abdominal and flank movement also will be painful that time. Okay, but apart from that, pain tendency will be there in the abdomen also, because you will be even more time. तो आपका urine बहुत time से ज़्यादा time पे रुका हुआ है, उसकी वजह से pain होगा और frequency will be more time will be here. Very important symptom, nocturia. Now night time pass urine. Okay, nocturia will be answer. Now the fever will be have a symptom, because urine depend more time is infection. So why for that we'll go for urine culture and sensitivity test. Okay, for diagnostic we'll go for urine culture test because of fever. When patient have fever, see मैंने क्यों साथ में ऐड किया है, क्योंकि जब fever आएगा वो साथ में सिम्टम दिख रहे हैं,
तब हम जाएंगे यूरिन कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, बिकॉज उस टाइम पता चलेगा कि समथिंग प्रॉब्लम विद दिस थिंग. नाउ व्हाट इज ट्रीटमेंट? वी नीड टू इंक्रीज फ्लूइड. हम पेशेंट को फ्लूइड इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 लीटर पर डे, मिनिमम 5 लीटर देना पड़ता है, बट पेशेंट ले रहा है कम ले रहा है तो हमको increase 3 liter per day. It will be so intake will be required to increase. Antibacterial drug also will require. So if culture sensitivity में कुछ पॉजिटिव आता है तो जिस बेस पे पॉजिटिव जो बैक्टीरिया आएगा उस बेस पे एंटीबायोटिक प्लान करेंगे. सिंपल टॉपिक है. Cystitis is the inflammation of the what? Bladder. Okay, because of there will be remain more times in the bladder. There will be sexual intercourse type problem or high estrogen. Okay. Now symptom will be pain in the abdominal flank area. Tenderness will be have. There will be a frequent urination. There problem with the while passing urination also. उसको pain होगा, body की problem होने वाली है और naturally night time will be a more urination, fever because of infection. And when fever come, we need to go for urine culture test, and on that basis we can plan the treatment. Next, nephrolithiasis या urolithiasis. Okay, nephrolithiasis या urolithiasis. Okay, so this also can cause renal stone. It also can cause renal stone. I made renal stone PPT once again, so will be understood. But understand, nephrolithiasis, urolithiasis, and kidney stone all are the same. What meaning of that? Presence of stone in urinary tract. Calcium oxalate है, uric acid है, या otherwise and stone present will be counted the stone. Now what is the cause? अगर आपका डाइट है, okay, see फिर से रिपीट कर रहा हूँ, nephrolithiasis और urolithiasis को किडनी स्टोन ही बोलते हैं. मैंने किडनी स्टोन अलग से बनाया है, so you will not confuse. Okay, ये क्या है? स्टोन present in the urinary tract. Okay, so maximum calcium oxalate है आपका और uric acid also will be there. is a common stone we have. Now डाइट्री के अंदर आपका ये स्टोन हो जाए तब, या आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए, सीडेंट लाइफस्टाइल हो, इमोबिलिटी हो और फैमिली हिस्ट्री ऑफ द गाउट जो हमने बात पढ़ी थी हमने. ओके, गाउट विल बी देयर. देन hyperthyroidism also will be here. So the other causes can stone. Now obviously you have stone, so will be a pain. Okay, renal colic pain are there in the patient. Okay, renal colic pain also there in the patient. So what you need to understand here in this patient, a patient will be have a stone in the this thing, stone in the kidney. So what will be our symptom? Obviously pain. Now pain कहाँ होने वाला है? Pain will be in the patient जहाँ पर will be a stone will be remain. अब stone है तो obviously जहाँ पर आपका stone जितने टाइम पे ज्यादा रहेगा उतने टाइम पे pain होगा. So here we need to understand patient will be have a what? Pain. So pain will be located in the nearby the kidney or nearby the ureter. So patient will be have pain around our genitourinary system. Genitourinary system patient will be have a pain. Okay. So in this will be very important in exam ask question, which are the stone common will be here? Which are the common stone present in the patient? Which are the common stone present in the patient? So we'll discuss one by one. See, when in ask exam, the renal calculi, nephrolithiasis, urolithiasis, please don't be confused. These all are form of the kidney stone. See why I'm focusing more, because the question simple आता exam में, तो इसका meaning क्या है? So what is nephrolithiasis? Is a formation of stone in the kidney. Okay, अगर आपके किडनी के अंदर अगर नेफ्रॉन के अंदर आपका स्टोन है तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेफ्रोलिथिसिस. अगर आपके वो यूरेटर के अंदर है उसको बोलेंगे हम यूरोलिथिसिस. ओके, दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. और कॉमन साइड हमारा नेफ्रोलिथिस होता है, किडनी स्टोन के अंदर ही हमारा वेरी कॉमनली विल बी हियर. ओके, और व्हाट रिजल्ट, इसका रीजन क्या है जो किडनी कॉमनली क्यों होता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम जो भी हमारे ऑक्यूपेसी है, जो भी डिस्प्लेस है वो किडनी में ज्यादा है और किडनी के अंदर ही ज्यादा टाइम इन्फेक्शन होने के चांसेस है, लाइक इन ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग, ऑल थिंग आर द कॉमन विल बी इन द पेशेंट. नाउ व्हाट आर कॉज विल डिस्कसिंग, इन कॉज में बात कर रहे थे हम द फैमिली हिस्ट्री है पेशेंट को. ओके, देन डाइटरी में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? विटामिन डाइट. ओके,
vitamin D diet, or all thing will be have vitamin D diet, phosphate diet, or oxalate diet है, was also can be important part in this. Okay, so it's also important thing apart from the uric acid. Okay, जो हमारा यूरिक एसिड है वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा. यूरिक एसिड आल्सो मेक स्टोन, यूरिक एसिड भी स्टोन बनाता है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग में बात करेंगे हम किसकी, गाउट. अभी गाउट में क्या होता है, दिल विल इंक्रीज यूरिक एसिड. गाउट में क्या होता है, आपका जो प्यूरिफाइड मेटाबॉलिज्म है वो लॉस हो जाता है. गाउट के अंदर ये प्यूरिफाइड लॉस, सो दिल लीड टू मेक यूरिक एसिड. यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्या बनेगा, यूरिक एसिड का बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा. ओके, it's about the our nephrolysis and urolosis. Okay, next thing, there'll be a pain. Now how will diagnose, we'll go for KUV X-ray. Okay, and then we'll go for the certain surgery also. Will be mentioned percutaneous nephrotomy or percutaneous nephrotomy, जहां पर आपका स्टोन इसको रिमूव करेंगे. And sometime with the external shock wave also, lithotripsy also can do, and we can remove the stone. Next topic हमारा glomerular nephritis. Glomerular nephritis. Now glomerular nephritis, so मतलब it is inflammation, so is a immune complex. आपका immune complex करता है क्या, एंटीजन एंटीबॉडी करता है, बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से बीटा हेमोलाइटिक स्टोन इन्फेक्शन में आपकी बॉडी में बीटा स्टोन इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वो आपके नेफ्रॉन को कर देगा इन्फ्लामेशन. ये अपने आप 14 डेज में अपने आप रिकवर हो जाता है. लाइक हमने बात की थी जीबीएस के अंदर, गुलेर बार्ड सिंड्रोम में जो बात की थी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसमें भी 21 डेज डोर है. सेम थिंग ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ योर नेफ्रॉन. ओके, क्या होता है, आपकी खुद की इम्यूनिटी एंटीजन एंटीबॉडी बनाती है किसके ऊपर, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पे. सो इसका एक कॉज क्या है, वन कॉज ओनली, बीटा स्ट्रेप्टोकोकल हेमोकोकल इन्फेक्शन, बट इम्यून विल बी रिएक्टिंग, इसलिए इन्फ्लेमेशन होता है. और विल टेक 14 डेज. थी बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं. 14 days disease of the kidney will be have a glomerular nephritis. Now साइन सिम्टम क्या है, पेशेंट है वो हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पेशेंट को प्रीवियसली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या विल बी हैव लाइक अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन विल बी हैव चांसेस कैन लीड टू हैव अ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस. एडिमा, एनोरेक्सिया, लिथार्जी, hematuria, because आपका नेफ्रॉन आर इन्फ्लामेशन, सो blood in urine also can come, dark urine can be have, और इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है तो फीवर होने के भी चांसेस हैं. So sometime we need to go for dialysis or we need to give digoxin drug because fluid will be more, so we need to give, and obviously infection है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा, so we'll go for antibiotic. And if you have high BP, so we'll give for antihypertensive drug. So this is about the glomerular nephritis. Okay, next बात करेंगे हम renal failure, very important topic, very important in exam. Okay, किडनी के अंदर टॉपिक आ जाए आपको याद रखना, renal failure very important topic. What is definition? It is a abnormal physiological situation where kidney are unable to perform. मतलब ये ऐसी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है जहाँ किडनी अपना काम करना बंद कर देता है या फिर unable to perform, उसका काम करना कम हो जाता है. सो उसका एक ही मेन कॉज है, हाइपोपरफ्यूजन. क्या है, हाइपोपरफ्यूजन मेन कॉज. ओके, सो व्हाट इज द मेन कॉज, हाइपोपरफ्यूजन. उसके अलावा विल बी हैव तीन थिंग जो मेंशन बात किया हमने कॉजेस के अंदर, ये तीनों कॉज ही हैं. ओके, डोंट बी कंफ्यूज, प्री इंटरनस क्या है, ये आपके क्या है, कॉजेस हैं. सो व्हाट विल मेंशन हियर, प्री रीनल, इंट्रारीनल या पोस्ट रीनल, मतलब किडनी के ऊपर, किडनी के अंदर या किडनी के बाहर. ओके, नो पीनल में इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, हाइपोपरफ्यूजन. क्लासिकल कॉज है, क्या होता है, बिफोर किडनी जो भी है परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तब चांसेस है. ओके, उसमें भी क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा तो क्या होगा, जो आपका जीएफआर रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो उससे क्या होगा, आपका यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा. सो वो क्या होगा, किडनी फेलियर. ओके, सो बिकॉज हाइपोपरफ्यूजन से क्या होगा, परफ्यूजन करना, किडनी को प्रॉपर्ली परफ्यूजन नहीं मिल पा रहा है, तो परफ्यूजन मिलेगा तो आपका जो नेफ्रॉन भी फंक्शन करना कम कर देंगे. सो वी हैव अ डिक्रीज जीएफआर and then lead to decrease renal output and then lead to decrease renal function. नेक्स्ट बात करेंगे, उसमें तीन चीज बोली, फ्लूइड लॉस, impaired cardiac function and extreme vasodilation.
फ्लूइड लॉस। समझ जाओ फ्लूइड लॉस में क्या होगा, पेशेंट है वह नोजिया, वॉमिटिंग, will be have GI bleeding or dehydration or hemorrhage, any reason, किसी भी रीजन से पेशेंट के अंदर फ्लूइड लॉस हो चुका है। हम बात कर रहे हैं प्रीनल की, हम किडनी के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी वजह से नोजिया या वॉमिटिंग या में ब्लड लॉस या में भी GI ब्लीडिंग, डिहाइड्रेशन, हेमरेज, किसी भी वजह से अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड लॉस हुआ है तो वो भी रीनल फेलियर का प्रीनल कॉज है। नेक्स्ट बात करें इंपेयर्ड कार्डियक फंक्शन। जब कार्डियक का फंक्शन कम हो जाए तो क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो किडनी का पास भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। किडनी के पास भी प्रॉपर्ली कार्डियक आउटपुट नहीं है तो किडनी आल्सो नॉट एबल टू डू प्रॉपर फंक्शनिंग। ओके, सो इंपेयर्ड कार्डियक फंक्शन। ओके, उसमें क्या आएगा आपका, MI हो, CCF हो, देन भी कार्डियक टेम्परमेंट हो, ऑल आर द कैन द रीजन ऑफ दैट। नेक्स्ट एक्सट्रीम वेसोडाइलेशन, बहुत ज्यादा वेसल डायलेट हो चुकी है, मतलब क्या, द फ्लो विल इंक्रीज, किडनी का काम बढ़ गया। कब हो गया ऐसा, जब सेप्सिस हो, ओके, बैक्टीरियमिया हो, DIC हो, ओके, विल बी हैव प्रॉब्लम विद द कोएगुलेशन, ओके, दैट टाइम ऑल आर द डिजीज कंडीशन कैन लीड टू एक्सट्रीम वेसोडाइलेशन। तो क्या होगा, किडनी का काम करने का, किडनी विल बी हैव इंक्रीज लोड। ओके, सिंपल याद रखना, प्रीरीनल किडनी के पहले हाइपोपरफ्यूजन हो जाए, हाइपोपरफ्यूजन हो जाए, क्यों हो जाए, 3 रीजन से, ये तो फ्लूइड लॉस हो, कार्डियक फंक्शन का प्रॉब्लम हो या एक्सट्रीम वेसोडाइलेशन। आपकी बॉडी में फ्लूइड या ब्लड लॉस है तो ऑब्वियसली किडनी में पास फ्लूइड या ब्लड नहीं है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। कार्डियक फंक्शन प्रॉब्लम है, मतलब कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं है तो वो प्रॉपर रिमेन नहीं कर पाएगा, या बहुत ज्यादा वेसल डायलेट हो चुकी है तो बहुत ज्यादा ब्लड आ चुका है तो किडनी नॉट एबल टू कंट्रोल। ओके, सो ये हमारा हो गया प्रीरीनल कोर्स। अब हम बात करेंगे किसकी, इंट्रारीनल, मतलब किडनी के अंदर, विद इन किडनी, किडनी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, ओके, जब किडनी के अंदर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, नेफ्रॉन डैमेज या बोन कैप्सूल जो है हमारे, बोन कैप्सूल जो भी हमारे हैं, तो क्या होगा, दे कैन लीड टू प्रॉब्लम टू द पेशेंट। ओके, उनमें फर्स्ट मेंशन किया मैंने, क्या किया, हीमोग्लोबिन, ओके, मेंशन किया HB यूरिया मींस हीमोग्लोबिन, यूरिन, आपके यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन है। क्यों होगा, बिकॉज हीमोलाइटिक एनीमिया हो या आपका एनी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो, कुछ रिएक्शन हुआ हो तो दैट टाइम, और एक्सेसिव लाइसिस, बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा। सेकंड थिंग, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, आपके ग्लोमेरुलर है, जो मैंने बात की ना, नेफ्राइटिस की बारे में बात की, वो हो, नेफ्रोटाइक हो, पुलनेफ्राइटिस हो, ऑल भी है, और खुद की इम्यूनिटी किडनी को डैमेज करे, ऑटोइम्यून, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑटोइम्यून आल्सो विल बी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज अ nephrotoxic substance. Some substance, yeah, some toxic are there which can be damage your nephron, like any antibiotic, any antiviral, any drugs, okay, any immunocompensatory drug, okay, these are all can lead to your damage of kidney. Okay, हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनल की बात कर रहे हैं, मतलब किडनी के अंदर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो जाए, नेफ्रॉन या बोन कैप्सूल प्रॉब्लम हो जाए, क्या क्या रीजन है, या तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन निकल जाए, ओके, लाइसिस हो रहा हो, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो रीनल के अंदर ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ हम टॉक्सिक प्रोडक्ट हो जो किडनी के लिए नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस, नेफ्रोटॉक्सिक इवेंट्स लाइक एंटीबायोटिक हो, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो, any immunoglobulin drugs, so okay, any NSAID drug or like brufaconazole drug will be used, can cause the problem. Now we'll go to the post renal, मतलब किडनी के बाद से हम बात कर रहे हैं रीनल फेलियर के अंदर, किडनी के पहले, किडनी के अंदर और किडनी के बाद की बात कर रहे हैं। नाउ किडनी के बाद क्या है, मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रॉपर है, कार्डियक फंक्शन प्रॉपर है, वेसल प्रॉब्लम चल रही है, किडनी फंक्शन प्रॉपर कर रही है, बट किडनी के बाद जो क्या आती है, आपके ब्लैडर आता है, ओके, देन यूरेटर आता है, ओके, और है प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम विद योर यूरिन एलिमिनेशन, जो यूरिन को निकालने वाला एरिया है उसके अंदर प्रॉब्लम है, मे बी यूरेटर है, यूरेथ्रा या ब्लैडर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो बोलेंगे पोस्ट रीनल। ओके, सो उसमें क्या, यूरियोलिथेसिस, ब्लैडर ट्यूमर,
यूरेथ्रल स्फिंक्टर या प्रोटोमेगेली। ओके, मतलब क्या है, सी सिंपल बात समझना है यहाँ पर, पेशेंट के अंदर किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, किडनी से प्रॉपरली यूरिन प्रॉपर निकल रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, बट किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। क्या मतलब, इसको किडनी का प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्टोन फॉर्म विल बी हैव। ओके, ट्यूमर बेटा बन जाए, स्फिंक्टर प्रॉब्लम करे, या कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए, या विल बी हो ज्यादा पोस्ट रिनल कोसिस। मैं फोर्स क्यों कर रहा हूं, बहुत से टाइम क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आता है, प्री रिनल, इंटरनल, पोस्ट रिनल। ओके, किडनी के पहले, किडनी के अंदर, या किडनी के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्यूट रिनल फेलियर। ओके, एक्यूट रिनल फेलियर की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, फर्स्ट थिंग, सडनली the inability of kidney regulate the fluid or electrolyte balance and remove the toxic product from body। suddenly आपकी जो बॉडी है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट को निकालना बंद कर दे, suddenly your kidney is not able to do this function। okay, now there are so many reason जो मैंने बात कर ली, प्री इंट्रा पोस्ट या सब पोस्ट के अंदर आ गए। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन सिम्टम में फर्स्ट आता है हमारा ओलिगोरिक फेस, ओलिगुरिया means oliguria। what is oliguria, ये मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, oliguria is a okay, so oliguria will be have, so oliguria will be the means urine output less than 400 ml। जब आपका यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml हो जाए ड्यूरिंग द ड्यूरेशन कितना है, 1 to 2 वीक के लिए, 1 या 2 वीक के लिए आपका यूरिन आउटपुट कितना हो जाए, लेस देन 400 ml। ओके, तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, what is normal urine output, what is normal urine output in a day, what normal per day। तो उसका आंसर क्या है, there will be minimum 1 to 2 ml per kg per hour will be here, 1 to 2 ml per kg per hour। what is normal urine output, 1 to 2 ml per kg, don't be confused। क्वेश्चन आता है what is normal urine output, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताऊंगा आपको। ओके, so 1 to 2 ml per kg per hour will be here, normal urine output will be here। so remember here is about the hour। now what about day, what about day, normal output कितना होगा, will be here normal output in the per day by also important thing, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि normal output कितना होगा, sorry, so in normal will be here, in output will be here 800 to 2000 will be here। 24 आवर में आपका एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन आउटपुट होना चाहिए, डिपेंड करता है एक वेट पे, so I am not telling you, but 800 to 2 liter will be our reason। okay, so 2 liter lot 2 liter will be here। अगर आपका पेशेंट के अंदर 400 ml यूरिन निकल रहा है और कब तक, 1 या 2 वीक तक, उसको बोलेंगे ओलिगुरिया फेज। ओके, इसे ओलिगुरिया फेज। उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, मेंशन हाइपर और हाइपरनेट्रीमिया, कैलेमिया और फॉस्फेटेमिया। ओके, दिस ऑल कैन लीड टू the problem। now what is normal creatinine level कितना होता है, normal creatinine will be, how much creatinine will be have, normal creatinine कितना था, 0.5 to 1.1 mg per dl। okay, this all will be have। next will be come to the hypokalemia, मैग्नीमिया। हाइपो आपके कैलेमिया हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, मैग्नीशियम कम हो जाए, उस टाइम पे भी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, और इलेवेटेड बीयूइन, आपका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन आपके ये लोग सब अपना हो जाए, तब भी आपके ओलिगोरिक फेज होने के चांसेस हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम विद द वेस्कुलर वॉल्यूम, आपका वेस्कुलर वॉल्यूम प्रॉब्लम हो जाए, क्वेश्चन में वो रीनल सॉरी राइट साइड वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर फेलियर या अजोटेमिया। ओके, और लेवल ऑफ कॉन्शियस बी अफेक्टेड विद दिस पेशेंट। सो सिंपल क्वेश्चन, पेशेंट विल बी हैव अ व्हाट, ओलिगोरिक फेज लेस देन 400 ml यूरिन पर डे, कितने टाइम तक, 1 to 2 वीक है, तो ये हाइपर हो जाएंगे, नेट्रीमिया, कैलेमिया और फॉस्फेटेमिया। हाइपो क्या हो जाएंगे, कैलेमिया विल बी कैल्शियम, मैग्नीशियम will be hypo, will be metabolic acidosis, and then because of metabolic acidosis patient have a cosmos breathing। okay, will be respiration will be आपका थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, and will be elevated BUN and creatinine will be in the patient। now next is a diuretic phase। diuretic phase क्या है, will be increase urine output, will be 3 to 5 liter per day। नॉर्मल कितना होता है 2, बट कितना हो जाएगा 3 to 5 लीटर, ड्यूरेशन कितना है 2 to 3 वीक्स। नाउ क्वेश्चन आता है, जब किडनी फेल हो गई है, जब
पेशेंट के अंदर किडनी फेल हो गई है, तो पहले हमने बात की डायबिटिक फेज की, फिर ओलिगोरिक फेज की, जहां आपका किडनी ज्यादा यूरिन नहीं निकाल पा रही है, यूरिन कम निकाल रही है, तो उसको हमने बोला ओलिगोरिक फेज, जो आपका 1 to 2 वीक रहेगा। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपका 1 to 2 वीक ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, डायबिटिक फेज, मतलब आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब किडनी ने क्या किया, किडनी वाज नॉट एबल टू फंक्शन, तो किडनी ने अपना काम करना कम कर दिया। फिर आपका काम मतलब सेम थिंग, यूरिन बढ़ता गया और आपने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, तो किडनी क्या होगा, किडनी में जो नेफ्रॉन है वो विल रप्चर। सो लाइक हम सिंपल सी बात करें, एक हम चाय की छन्नी ले, चाय की छन्नी में हम चाय छानते हैं, ओके, तो जब आपके अंदर चाय अंदर ज्यादा रह जाएगी तो क्या छन्नी के अंदर, तो चाय कम आएगी, तो आपका वो क्या हो गया, ओलिगोरिया फेज। ओके, जब आपकी सिंपल चाय जब छान रहे हो तो आप उसमें यूरिन निकल रहा है या फिर चाय निकल रही है, तो छन्नी के अंदर ज्यादा चाय है तो आपका चाय कम निकलेगी, तो हो गया ओलिगोरिया फेज। ओके, मतलब ज्यादा कम निकल रहा है आपका चाय। नेक्स्ट मैं बात की डायबिटिक फेज, जहां पर चाय ज्यादा निकल रही, क्यों, अभी आपकी छन्नी फट चुकी है, अभी छन्नी के पास आपने इतना प्रेशर लगा दिया है क्योंकि आपने छन्नी को फाड़ दिया है, तो आपका चाय ज्यादा निकलेगा। तो सेम थिंग काउंट किडनी में आपका जो ओलिगोरिया फेज में आपने क्या किया था, आपने बहुत ज्यादा क्रिस्टल, जो बहुत ज्यादा हाइपर नेट्रीमिया है, वो ये जो आपके फॉस्फेट वो सब बढ़ चुके थे, तो वो क्या हो गया, किडनी के नेफ्रॉन में जाके जमा हो चुके हैं, तो वो उसको काम करने नहीं दे रहे हैं, उसका जीएफआर कम कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कम कर रहे हैं। तो एक टाइम तक तो किडनी ने ट्राई किया कि इसको कंट्रोल करें, फिर 1-2 वीक के बाद किडनी ने अपना गिव अप कर दिया, नाउ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सो विल बी अ किडनी रप्चर हो गया। सो द मैक्सिमम आपका आउटपुट जितना भी था सब एक साथ निकल जाएगा। सो 2 से 3 वीक तक आपका डायबिटिक फेज होगा। फिर क्या होगा आपका रिकवरी फेज। डायबिटिक फेज में क्या होता है, विल बी हैव इंक्रीज इन आउटपुट, पोलीयूरिया, बीपी विल बी फॉल डाउन, बिकॉज जितना भी था फ्लूइड सब बाहर निकल गया। सो हाइपोवोलेमिया विल बी, सो हाइपोटेंशन द सिम्पटम इन द पेशेंट, लेवल ऑफ कॉन्शियस विल बी इंप्रूव। हमारा एलओसी ओलिगोरिया फेज में बढ़ जाता है, बट डायबिटिक फेज में ओलिगोरिया में, तो डायबिटिक फेज में हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियस विल बी इंप्रूव होता है। वन से क्या होता है, जो आपका एलओसी है वो अफेक्ट करता है, कब क्वेश्चन आता है, एलओसी विल बी अफेक्ट इन विच फेज ऑफ द किडनी फेलियर, ओलिगोरिक फेज। ओलिगोरिक फेज में आपका एलओसी अफेक्ट करेगा और डायबिटिक फेज में इंप्रूव करेगा। नाउ क्वेश्चन, सिम्टम मतलब कंडीशन वर्स्ट हो रही है और बोल रहे हैं इंप्रूव करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी ये हाइपर थे, हाइपर नेट्रीमिया, गैलीमिया और फोस्फेटीमिया, ये सब बाहर निकल गए। ओके, सो क्या होगा, इससे आपका जो प्रॉब्लम हो रही थी मेंटल स्टेटस को, वो इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ फिर से रिपीट करता हूं मैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ओलिगोरिया फेज में अफेक्ट होता है, बिकॉज जो आपके सोडियम पोटेशियम विल बी मोर इन देयर किडनी। ओके, जो डायबिटिक फेज में बिकॉज ऑफ किडनी नाउ नॉट एवर ट्राई टू डू एनीथिंग, किडनी में पावर ही नहीं, किडनी सबको बाहर निकाल दिया, सो सोडियम और सब नेट्रियम सब बाहर निकल जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंप्रूव होता है। क्वेश्चन आता है ना, LOC will be improved in the diabetic phase and worse in the oliguric phase. Okay. Next question, recovery phase. After body will try to recover. Okay. Depend person to person. It require 3 week to 12 month. Okay. 3 week to आपका, so 3 months to 12 month will be your chances will be this thing. Okay. So आपके 1 to 2 week will be oliguric phase. 2 to 3 will be in the diabetic phase. Then after will be a recovery phase 3 to 12 month, depend person to person. Okay, so ये हमारा क्या हो गया, the sign symptom बात करें या phase of the renal failure बात करें। Now how will diagnose, अगर हम बात करें डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ऑब्वियसली जैसा हमने बात की कार्डियक के अंदर की बात की हमने, फिर हमने बात की सेंट्रल सिस्टम के अंदर बात की हमने, ईईजी की बात की, और दूसरी बात की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किडनी का प्रॉब्लम है तो विल गो फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट आरएफटी, विल गो फॉर यूरिया, यूरिक एसिड और किडनी टेस्ट, तो आपको यूरिक एसिड ज्यादा मिलेगा, और वो जो हमने देखा है पर दिख रहा है वो मिल जाएगा। देन आपका जीएफआर लेस हो जाएगा, विल गो फॉर इलेक्ट्रोलाइट आप चेक करोगे, और विल सी द आपका पीएच चेक करोगे। ओके, व्हाट इज नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन, व्हाट नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन 6 नॉर्मल पीएच कितना होता है हमारा, वो आप पूछा सकता है,
सो उसका आंसर क्या है 6.5 to 8 नॉर्मल पीएच में कितना होता है 6.5 to 8 is normal pH of urine. Okay, so this is the question can be asked in exam. Now how to manage? We'll go for maintain fluid and electrolyte imbalance. जितना fluid loss हुआ है या जो भी आपका लग रहा है according to symptom wise you need to give the treatment. Next you go for drugs, diuretics. Diuretic drug will give. Now my question to you here, now patient have a kidney problem. जहां पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, किडनी ने काम करना बंद कर दिया सडनली, और आप दे रहे हो डाययूरेटिक. नाउ डाययूरेटिक क्या है, इनका काम क्या है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज योर यूरिन आउटपुट. हम बात करते हैं स्पेशली ऐसे से बात करते हैं, हम ऐसी ड्रग क्यों देंगे जो किडनी का काम और बढ़ा दें. हम क्या बोल रहे हैं, आपकी किडनी फेल हो चुकी है और हम ड्रग दे रहे कौन सी, which drug we are giving which will be increase output. हम चाहते हैं आपका इन आउटपुट बढ़ जाए, तो हम किडनी का काम और बढ़ा देंगे. बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा किडनी का रप्चर हो चलेगा, बट ये जो हाइपरनेट्रीमिया और कैलीमिया वगैरह हैं, ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ करने वाले हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. तो प्रायोरिटी वाइज हमको उसको बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट देते हैं. अदरवाइज डायरेटिक आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, डायरेटिक आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन रीनल फेलियर. क्यों, क्योंकि पेशेंट का किडनी फेल हो चुका है और आप और किडनी काम करने के लिए बोल रहे हो. नाउ व्हाट इज रीनल फेलियर, सडनली किडनी फेल. ओके, सडनली किडनी नॉट डूइंग द फंक्शन, एक्यूट रीनल फेलियर. ओके, तो हम ड्रग दे रहे हैं डायरेटिक, किडनी और काम करो. ऑलरेडी ओलिगरी फेज में था तो उसका इनपुट कम था, डायरेटिक में से पूरा किडनी अपना सब गिव अप कर दिया और आप बोल रहे हो अभी ज्यादा काम करो. क्यों, क्योंकि जितना भी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एक्स्ट्रा हैं, वी नीड टू रिमूव, अदरवाइज प्रॉब्लम के न कर. उसके अलावा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. नाउ व्हाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इंप्रूव द कार्डियक फंक्शन. एंटी हाइपरटेंसिव बिकॉज़ हमने बात की थी, पेशेंट विल बी इन द ओलिगुरिया फेज, विल बी हैव अ हाइपरटेंशन एंड दैट विल बी हाइपोटेंशन. सो ओलिगुरिया फेज में होगा तो हमको उसको हाइपरटेंसिव ड्रग देनी पड़ेगी. आई होप क्लियर एवरीवन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम देंगे प्रोटोन इनहिबिटर देने वाले हैं, सोडा बाइकार्बोनेट भी देंगे. अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, so we need to give soda bicarbonate. Okay, then apart from that we go for K binder. K binder भी देंगे, like a sodium जो भी है उसको बाइंड करने के लिए, हम चाहते हैं सोडियम निकले नहीं बाहर. Okay, so they are the important thing will be give the patient. Once I repeat, will important thing diuretic will be very important thing. Question exam ask in exam, diuretic क्यों देते हैं, because हम तो चाहते हैं कि न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर नहीं हो. Now what is the important nursing aspect, need to monitor IO chart. क्वेश्चन आता है, renal failure patient, priority of nursing intervention. First important thing is a intake output chart. Second will be have a weight monitoring. Okay, will be a increased weight in the renal failure. Okay, apart from that will be need to give क्या डाइट देंगे, important है, will give the low protein high carbohydrate diet. will give the low protein हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि ज्यादा अमीनो एसिड नहीं बने, सो वी रिक्वायर लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट. आई होप क्लियर. किडनी फेलियर, किडनी फेलियर. ओके, हमने बात की थी किडनी फेलियर की बात की थी, जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना कब करता है किडनी. हमने कॉजेस की बात की, फिर हमने बात की एक्यूट रीनल फेलियर की बात की, उसके अंदर हमने बात किया क्या फेजेस की बात की, ओलिगोरिक फेज, डायरेटिक फेज एंड रिकवरी फेज. See, I'm focusing more because क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन ऑफ किसने आने ही वाला है. ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रोनिक किडनी फेलियर या CKD या क्रोनिक रीनल फेलियर. प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन of the kidney then continues until nephron replaced by scar tissue या gradual loss of the renal function. See, यहाँ पर एक चीज आई है क्या, irreversible destruction. एक बार जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है वो वापस रिकवर नहीं होने वाला है, बिकॉज लॉन्ग टाइम तक आपकी किडनी फेल है और आपने कुछ नहीं किया. क्रोनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल लॉस. ओके, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्टिव लॉस व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द, व्हिच आर वेरी डेंजरस कंडीशन इन द पेशेंट. हम बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा है कॉजेस की बात करेंगे पहले हम. ओके, विल गो आफ्टर दिस थिंग. कॉजेस में आपका ऑब्वियसली क्या कॉज आएगा, causes में what will cause first acute renal failure, ARF will be the cause,
अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन एग्जाम में आता है which is the common cause of chronic kidney failure? Remember, is a hypertension. Hypertension are the most common cause of the patient causing the chronic kidney failure. उसके अलावा डायबिटीज mellitus, autoimmune disease, कुछ autoimmune causes हैं, ये also can lead to, मतलब खुद की बॉडी किडनी को डैमेज कर रही हैं. रीनल स्टेनोसिस, आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं will be have स्टेनोन, will be narrow. क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, वो टाइम तक आपके किडनी के अंदर स्टोन है. ओके, सी आई रिपीटिंग के क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए ओके वो क्वेश्चन आते हैं. कॉमनेस क्या है? हाइपरटेंशन. ओके, देन हम बात करेंगे स्टेजेस के अंदर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड स्टेज. क्वेश्चन आता है एग्जाम के, व्हाट इज माइल्ड सीकेडी, व्हाट इज मॉडरेट सीकेडी, व्हाट इज सीवियर सीकेडी, व्हाट इज एंड स्टेज ऑफ सीकेडी. माइल्ड सीकेडी क्या है? आपका यूरिन आउटपुट जो भी आपका नेफ्रॉन का काम है वो 60 to 89 मिनट हो जाए. अगर आपका वो 69 to 89 मिनट हो जाए आपका, तो माइल्ड है. मॉडरेट 30 to 59, सीवियर 15 to 29, और एंड स्टेज जहां आपका लेस देन 15 भी निकल नहीं रहा है यूरिन आउटपुट, सो आपका हो गया अब किडनी का डैमेज. नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, दिस इज अबाउट द व्हाट स्टेजेस. नाउ व्हाट हैपन विल बी एनी कॉजेस. So kidney have an injury, they affect your GFR rate and affect your renal function. उससे क्या होगा? जो भी आपके fluid and electrolyte बढ़ जाएंगे and they lead to the kidney fail. Symptom depend the person to person and depend on the stage. जो हमने बात की थी ना फेस के अंदर, ओलिगोरिक फेस, एंडी फेस यहाँ पर भी आएंगे. उसके अलावा उसी स्टेज के अंदर, कौन सी फेस के अंदर है? माइल्ड में है, मॉडरेट में है, सीवियर में है कि एंड स्टेज में. तो अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो क्या होगा? डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, विल बी हैव एन्यूरिया. ओके, देयर विल बी अ डिफरेंट कलर ऑफ यूरिन, विल बी हैव लाइक अ स्ट्रो कलर. ओके, लाइक स्ट्रॉबेरी कलर विल बी हैव. प्रोटीन आरबीसी विल बी देयर इन द यूरिन. ओके, मींस हीमोचूरिया विल बी हैव. ओके, देन बिकॉज़ ऑफ किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? किडनी क्या करेगी? जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देगी. तो यूरिन में क्या निकलने वाला है? प्रोटीन है आपका, ये ब्लड है, सब निकल जाएगा बाहर. ओके, कार्डियक के अंदर क्या होगा? पेशेंट है हाइपर वोलेमिया. ओके, सो हाइपोवोलेमिया. हाइपोवोलेमिया, किडनी ने सब कुछ बाहर निकाल दिया. किडनी का फिल्टर ही नहीं है. सिंपल एग्जांपल, चाय वाला एग्जांपल रखना चाहिए, चन्नी वाला. किडनी बस कुछ है ही छानने के लिए, क्या करेगी? सब कुछ बाहर निकाल देगी. तो जितना वॉल्यूम से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा हाइपोवोलेमिया. बट साइनस सिम्टम हाइपरटेंशन हो गया. कुछ टाइम के लिए आपके पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन होगा, बिकॉज अब आप आज बात की थी ना रिवर्सिबल, कुछ चीजें बॉडी में ट्राई करते हैं कि अपने आप को रिकवर करने के लिए. तो हाइपरटेंशन कुछ टाइम में हाइपरटेंशन रहेगा, फिर हाइपोटेंशन, देन विल बी अ सीसीएफ, देन विल बी अ फेलियर ऑफ द लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड राइट साइड हार्ट फेलियर विल बी हैव. ओके, देन रेस्पिरेटरी में क्या होने वाला है? विल बी हैव अ कंजेशन ऑफ द पल्मोनरी, और विल बी हैविंग इन द एनीमिया आल्सो विल बी हैव, विल बी अ चेंज टेस्ट विल बी आल्सो प्रेजेंट इन द पेशेंट. All the symptoms will be dependent to the person to person. Now, how to diagnose? Obviously, diagnose the same thing. We'll go for renal function test. We'll go for the electrolyte test. We'll go for see the blood test. Blood test में आपको hemoglobin less मिलेगा और WBC बढ़ा हुआ मिलेगा, वो प्लेट आपका कम मिलेगा. Then go for UHG. UHG दिख जाएगा किडनी का कितना साइज है, छोटा साइज है, this thing you understand. Then we'll go for treatment. Treatment में will be monitor the and maintain the electrolytes, because we want कि पेशेंट विल नॉट गो न्यूरोजिल कॉम्प्लिकेशन. सी किडनी फेल हो जाए एक बार, हम रिकवर कर पाएंगे, बिकॉज किडनी फेलियर विल बी वी कैन चेंज किडनी, बट वी कैन नॉट चेंज द ब्रेन. दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी. क्वेश्चन एग्जाम में आया है द प्रायोरिटी वाइज मैनेजमेंट इन द किडनी फेलियर. सो रिमेंबर द मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स. Maintain electrolyte is a priority because we want कि आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट नहीं करे. Apart from that, we'll go for maintain the cardiac function, because after brain cardiac आपका priority है, तो cardiac function को priority करोगे. Apart from that, you go for dialysis and renal transplantation, because आपके पास यहाँ पर उसके अलावा ज्यादा स्कोप नहीं रहा है, because will be more prone to the irreversible damage, जो आपका डैमेज ज्यादा हो चुका है. Okay, so dialysis and renal transplantation also can do. Now
question will come in exam about all this thing. Ki a symptom will be have in the patient. Okay, so we nurse point of view क्या important है? तो nurse point of view important क्या है? Intake output chart जो मैंने पहले बात कर चुके थे. Intake output chart is very important thing. Okay, so diagnosis will be have like acute intolerance, insomnia, anemia, all we have. Okay, so to understand the very important thing, कि इसके problem can occur. Okay, so in this patient, ये patient है hypermagnesemia, so हमको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ेगा as an antidote. Okay, because जब आपका hypermagnesemia हो जाए तब हमको वो treatment देना पड़ेगा. And we have to monitor the heart rate, blood pressure, central nervous system. Also, we need to monitor the patient. Okay, this is about our kidney failure. Next, we'll go for dialysis. Dialysis is a very important thing. Removal by artificial mean of metabolic waste, excess electrolytes, fluid from the client. सिंपल इज अ प्रोसीजर टू रिप्लेस लॉस ऑफ फंक्शन किडनी. जो भी आपने किडनी ने काम करना बंद कर दिया है उसको डायलिसिस प्रॉपर्ली करेगा. देयर आर सम प्रिंसिपल लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, and then we have one more principle, we have ultrafiltration. All the principles also will be have, so we'll discuss one by one. Okay, now first wait on. First, there are two types of the dialysis: hemodialysis and peritoneal dialysis. Hemodialysis and the peritoneal dialysis. So what we'll do, we'll discuss one by one here in this thing. So what is the will be have patient will be have a kidneys fail. Now we want kidney do the function. We want kidney अपना काम वापस करे. So हम क्या करेंगे? We'll go for dialysis. We'll go for two dialysis: hemo and peritoneal. We'll go for hemo and peritoneal dialysis. तो उसमें क्या होने वाला है? हीमो के अंदर will be want there will be a replace of the kidney function. जो भी किडनी का आपका काम करना बंद कर दिया है वो रिप्लेस हो जाए to the treat by what? Blood purification. आपके ब्लड को प्यूरिफाइड करेगा. वो क्या करेगा? हीमोडायलिसिस करेगा. ओके, सो फंक्शन ऑफ द दिस थिंग इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट. क्या काम है इसका? जो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने और रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है. ओके, सो अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ विल गो फॉर हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस में क्या होता है? विल बी हैव वन लेयर. वी आर यूजिंग ब्लड. हम क्या करते हैं? एक ब्लड लेंगे. ब्लड को क्या करेंगे है? हम मशीन ब्लड हीमोडायलिसिस मशीन में डालेंगे और उसको वो फिल्टर करके वापस अंदर डाल देगा. विल गो फिल्टर एंड विल बी go back. Okay, so there is a process will be replace of all waste product, waste urine. So इसके अंदर क्या करते हैं? We are the purified blood को purified करते हैं in the condition जहाँ पर using hemodialyzer. तो इसको बोलते हैं hemodialyzer. Hemodialyzer के इसके बने होते हैं. उसके अंदर क्या होता है? हेलो फाइबर होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं. ब्लड को इन लेगा, फाइबर उसके अंदर जाएगा और वो वापस बाहर निकाल देगा. Then will be have some content micro element और macro element. माइक्रो में क्या आता है? यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है या वाटर है या माइक्रो एलिमेंट. मैक्रो में क्या है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट. इन सबको निकालने का काम किसका काम है? हीमोडायलिसिस में. बट हम इसके प्रिंसिपल क्या है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट रिवाइज डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ योर लो हाई टू लो, हाई कैसे टू लो में जाएगा, वो आपका डिफ्यूजन हो गया. ऑस्मोसिस लो टू हाई, ओके, बट मॉलिक्यूल है यहाँ पर. और अल्ट्राफिल्ट्रेशन जहां पर प्रेशर भी हम डाल रहे हैं, विद द प्रेशर विल बी मूविंग दिस थिंग. सो थ्री प्रिंसिपल काम करते हैं आपका क्या? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन विल बी द थ्री प्रिंसिपल बी इन द पेशेंट. ओके, नाउ क्या होता है इसके अंदर? विल सी द पिक्चर हियर. See, like what happens is, imagine the picture. Blood going to the patient to machine. From machine, we have heparin pump.
जो ब्लड क्लॉट करने नहीं देगा. Then will be after blood not clot, will we go to the dialyzer? Will be dialyzer जो बात की थी मैंने आपको. पानी बनाने के बराबर हो जाएंगे. Sir, voice is not audible. चप्पू ला तो फिर. Was audible with you? Yes, sir. Okay, so what we're discussing here about picture of the hemodialysis. Picture of the hemodialysis में क्या होने वाला है? The urine will be, say blood will be come from the patient. Blood will be come from the patient to the machine, and machine will be to filter. पहले आपका ये सिंपल काउंट करो, ये आपका फंक्शन है जहां पर आपकी आर्टरी से ब्लड जाएगा मशीन के अंदर, और मशीन से हेलो फाइबर या फिर डायलाइजर, क्या होता है हेलो फाइबर, वो क्या करेंगे यूनिट को फिल्टर करके वेन के थ्रू आपस अंदाज डाल देगा. तो आर्टरी विल गो इनसाइड एंड फॉर वेन विल बी कम आउटसाइड. ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा मैकेनिज्म, हाउ विल बी द फंक्शनिंग. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि वी नीड टू रिक्वायर, हमको क्या क्या चाहिए. अगर हमको पेशेंट के अंदर ये असेस चाहिए तो हमको कुछ चाहिए पड़ेगा क्या, या तो वी रिक्वायर एवी फिस्टुला. ओके, वी वांट कि आपका आर्टरी और वेन को हम साथ में फिस्टुला बना दे, या व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक like you can use femoral artery. Okay, we can use femoral artery, otherwise we can use other artery, but we want कि आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली वो जाए. So we can take femoral artery, subclavian artery, jugular vein, all they can do, but priority always will be a fistula is the main thing. Okay, so हम क्या बात कर रहे हैं, डायलिसिस की बात कर रहे हैं. डायलिसिस क्या कर रहे हैं, हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस will be have a important thing. The dialysis ये ब्लड के थ्रू, हीम मींस ब्लड के थ्रू डायलिसिस करता है. ओके, सो वी हैव थ्री प्रिंसिपल हियर. वो प्रिंसिपल ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन की उस बेस पे माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट को बाहर निकाल देगा. ओके, एंड हमने पिक्चर देखा ही है. फ्रॉम आर्टरी विल ब्लड गो इनसाइड, फ्रॉम वेन विल बी कम आउट कम टू द पेशेंट. ओके, सो लाइक वी कैन यूज, सो हियर वी कैन हैव something like what as we require AV fistula, femoral artery, subclavian artery or jugular artery will be there. In emergency time we can use the artery, but it's not emergency, so we need to go for AV fistula. Okay, so now next, the what are the nursing responsibility while patient will be have a in the hemodialysis. Hemodialysis patient will be have a what responsibility, we need to see the patency of the your दिस थिंग कैसेटर, आपका जो भी आई फिस्टुला जो भी है उसका पैटर्न चेक करना पड़ेगा. मोड वाइटल साइंस एंड इन्फेक्शन प्रोटोकॉल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, so about our hemodialysis. Now what complication occur, air embolism, then we have a dyslipidem syndrome, then we have will be lead to the dialysis encephalopathy and infection and hepatitis. Something can occur to the patient. So what is air embolism, because of जब पेशेंट एकदम आर्टरी या वेन से ब्लड ले निकाल रहे हो तो by mistakenly there will be air go inside. Most common complication in the hemolysis is air embolism. Then is the next dysequilibrium syndrome. उसमें क्या होता है, आपका जो सेमी पोलर पोजीशन है, so क्या होता है, will be increase ICP, आपका IC बढ़ जाएगा. क्यों, because आप सब कुछ बाहर निकाल रहे हो. ओके, सो और सब कुछ टाइम भी आप वापस रिकवर कर रहे हो. So we have increase ICP because of extra vessel pressure will be increased, so fluid shifting बढ़ जाएगा. So this will be have this symptom. Then dialysis encephalopathy, because dialysis they will be affect your brain, and that can lead to encephalopathy. Your own body is damaging your brain. Okay, so it will be these are the problem can occur. Apart from that, infection and hepatitis B, C or infection also can occur to the patient. Okay, this is about our hemodialysis. Next thing we'll see about AV fistula. AV fistula के advantages क्या है, will be important thing, will be easy to use. Okay, and can be easy to see. What is the disadvantage, will be not easily get, always जो बनता है प्रॉपर्ली बन नहीं पाता है,
and will be done most of time rupture will be have the problem in the patient. Okay, इसके बाद क्या हो गया हीमोडायलिसिस. अब बात करेंगे हम peritoneal dialysis बात करेंगे. We'll speak about the peritoneal dialysis. Okay, so for peritoneal dialysis hemo means heme और peritoneal मतलब क्या है, ये आपका peritoneal cavity, a special prepared dialysis solution in the abdominal cavity where peritoneum act as a semi-permeable membrane between the dialyzer or dialysate और the blood. मतलब आपके ब्लड और डायलिसिस के बीच में जो आपकी सेमी एब्डोमिनल मेंबर है वो एक काम करेगी, एक फिल्ट्रेशन का काम करेगा. Okay, so the abdominal cavity of the peritoneum will be have like a filtration will be have between the blood will be important part. Okay, now what will be the thing here, in which patient will require, किस पेशेंट में हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जहां पर पेशेंट के अंदर सीकेडी है, क्रोनिक किडनी फेलियर है या क्रोनिक रीनल फेलियर है, वो माइल्ड या मॉडरेट में उस टाइम पे कर सकते हैं. हम सीवियर या एंड स्टेज पे हम ये नहीं कर पाएंगे. ओके, इन सीवियर एंड लेट स्टेज वी आर नॉट एबल टू डू व्हाट पेरियोडायलिसिस, कुछ ऐसा में आ सकता है. ओके, देन विच आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहां हम नहीं कर पाएंगे और मेंशन किया. उसके अलावा there will be have intestinal disease, ये पिछले में already have intestinal infection, that time also we cannot do that. Okay, because हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को डाल रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इसलिए हम उसको नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे इसके अंदर, there will be a procedure inflow, dwell and outflow. So first क्या करेंगे, we will take 3 to 5 centimeter below, याद रखना क्वेश्चन आता है, क्या करेंगे, below 3 to 5 centimeter below umbilicus will use access. हम 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे umbilical के नीचे access यूज करेंगे और उस पे लगाएंगे कैथेटर. ओके, एंड आफ्टर एक बनाने के बाद, फ्लो बनाने के बाद 1 to 3 वीक के बाद वी कैन यूज. और जब उसको बनाएंगे zigzag में बनाते हैं, we'll make it in the zigzag manner, use the zigzag manner. Okay, and what we'll do, will be do inflow, outflow and dwell. Means what we'll do will be 1 to 2 liter, 1 to 2 liter dialyzer fluid. Okay, peritoneal fluid will be put in the patient peritoneal cavity for 10 to 20 minutes. 10 से 20 मिनट तक के लिए आपके पेशेंट के अंदर हम जो फ्लूइड है वो अंदर रख देंगे. Then will be a dwell, means time will be there, will be that time क्या होगा, फ्लूइड और peritoneal cavity अपना काम करेगा, ये भी फिल्टरेशन करना काम करेगा. Then will go for outflow. That time क्या होगा, that time will be have been understood कि there's some reaction to observe, हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, will be क्या some problem. So आपका जो इनफ्लो है, इनफ्लो will be have 10-20 मिनट टाइम लगेगा, और जो आपका ड्वेल है मतलब जो एक्चुअल काम हो रहा है फिल्ट्रेशन का will be take 30 मिनट to 8 आवर, 30 मिनट to 8 आवर लगेंगे इसको ड्वेल को. सी मतलब क्लियर दिस थिंग, डोंट बी कंफ्यूज. आपका जो इनफ्लो है मतलब आपने क्या किया है, आपने अम्बिलिकस के नीचे आपने एक 3-5 सेंटीमीटर नीचे आपने 1 to 3 वीक के अंदर अपने कैथेटर असेस कर दिया है. ओके, और आप 10 to 20 मिनट के अंदर विल बी पुट फ्लूइड इनसाइड. ओके, देन विल बी रिमेन द फ्लूइड 30 मिनट to 8 आवर, डिपेंड पर्सन टू पर्सन. 30 मिनट to 8 आवर क्या करोगे, आप फ्लूइड अंदर रहने दोगे. उसके बाद आप करोगे आउटफ्लो, जो भी आपका ड्रेनेज है उसको आप फ्लूइड की वजह से बाहर निकाल दोगे. ओके, अबाउट और पेरिटोनियल डायलिसिस. नाउ उसमें क्या है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. व्हाट आर द नर्सिंग रिस्पिरेटरी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. बिफोर में क्या है, वी नीड टू से द कॉन्ट्राइंडिकेशन. कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पेरियोडायलिसिस. नाउ व्हाट कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट हैव अ सीवियर या एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, दैट टाइम वी कैन नॉट डू, और पेशेंट हैव एनी peritoneal infection या intestinal obstruction, anything will be have or discrimination in the peritoneal cavity are not applicable for periodialysis. Okay, we'll go for weight checking. Before weight check and after weight check required, तो आपको before weight check करना पड़ेगा. Go for vital sign check. We need to go for TPRBP checking. Then we need to tell patient empty the bladder. Empty the bladder are important thing. And we go for lab parameter, कितना क्रिएटिन है, कितना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, उस पे हमारा ढेर होता है कितना टाइम तक हमको पेशेंट को ड्वेल करना है. ओके, नाउ ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब आप प्रोसीजर कर रहे हो
So you to understand aseptic technique need to follow. Okay, and will be understand कि we to start fluid timing और out fluid timing को properly mention करना है, and while procedure we need to monitor vital signs continuously. Okay, after और the outflow दिन after we understand कितना हमने इनफ्लो किया था उतना आउटफ्लो आया है. एग्जांपल हमने 1 लीटर डाला है इनफ्लो, तो 1 लीटर आउटफ्लो आया कि नहीं, we need to understand intake and output. Okay, then after procedure weight checking, हमने बिफोर में चेक किया था तो वेट चेक करेंगे, और once again we go for blood checkup and we'll see बिफोर में creatine पोटेशियम या BUN ज्यादा था, अभी नॉर्मल पे आया कि नहीं आया, and we'll go for documentation. Okay, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग पर्सनालिटी इन द बिफोर आफ्टर क्वेश्चन कैन आस्क इन एग्जाम. Okay, now what are complications can occur? What are the complications that can occur because of peritonitis? Now, obviously, we are putting something we are doing extra to the patient. So, important infection, peritonitis. This can lead to inflammation of a peritoneum cavity, can lead to this thing. So, if while doing procedure, patient have a fever, abdominal pain, nausea, vomiting, stop the procedure. Dwell को stop करके फटाफट outflow कर दो. Okay. So what important thing? Complication can occur. What will be have a inflammation of the peroneal cavity. So we don't need to understand while doing procedure. If patient have a fever, abdominal pain, or nausea, vomiting, all still we have. So we need to go for outflow as early as possible. Management में क्या करेंगे? Will be go for antibiotic, analgesic, all we give. उसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है. सो हमको देखना होगा कि आपका आउटफ्लो प्रॉपर तो नहीं इसलिए आपको पेन हो रहा है. तो सीधे क्लाउडी कलर का कुछ आपका फ्लो हो रहा है या समथिंग विल बी हैव, वी नीड टू गो फॉर दैट. नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ द पेरिटोनिटिस. इसके मेनली तो टू टाइप्स, कंटीन्यूअस एम्ब्युलेटरी पेरिटोनिटिस या automated peritonitis. Now what is continuous? Name is suggesting continuous will be here. Okay, so there will be force will be performed, no need to any extra machine required, directly can use this thing. Okay, mainly done with ultrafiltration because of now what ultrafiltration pressure से जो भी आपका फ्लूइड का एक्सचेंज हो जाएगा और आपका 8 आवर टू 24 आवर तक कंटिन्यूस यू कैन गो फॉर CAPD. ओके, आप कंटिन्यूस पेरिटोनिटिस के लिए आप 8 टू 24 आवर तक कंटिन्यू कर सकते हो. इसका रीजन क्या है, हम क्यों करते हैं, ये स्लोली काम करता है, सो वी कैन यूज दिस थिंग. ओके, सो अबाउट द कंटिन्यूस पेरिटोनिटिस. नाउ व्हाट इज ऑटोमेटेड, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक विल बी डू दिस थिंग. इट्स वेरी नॉट कॉमनली यूज, वी रिक्वायर मशीन. We have machine their time, so we are not using commonly. Okay, next thing, if will be not dialysis not functioning, dialysis is not usable, then we'll go for renal transplantation. हमने बात की थी ना dialysis की, हमने inner field के अंदर we'll go for dialysis, next the renal transplantation. Okay, so in this we require healthy donor and healthy recipients. Okay, so both will be here, donor will be ready with this thing and we'll go for this thing. Before that we'll go for cross matching. Cross matching will be properly get, then we'll go for what, we'll go for the renal transplantation. Okay, next we'll go for BPH, benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy is very important topic here, asking exam BPH. Okay, now what is simple thing is the enlargement of your what, prostate. Okay, the enlargement of prostate is called BPH. Okay, so what will we say here, patient will have a granular enlargement or hyperplasia and our growth smooth muscle or connective tissue of the prostate is called BPH. Okay, though is a maybe is a non-malignant cancer nahi hai, is a normal we have, is a prostate enlarged, is a compressed because the urethra will be here, so urination also will be affected. Cause kya hai iska, the cause will be age or the causes or hormonal. Age या hormone cause hai. Age में क्या है, increase age can cause problem in the now obviously prostate, so remember the male will be here. Okay, and testosterone and will be here the main reason the patient. Next thing, sign symptom क्या होगा, there will be have a urinary problem will be here. A habit of the urinary also affected, nocturia, night time will be have urination, frequency will be more urination, maturia, enlarged prostate will be here. Then we have while passing will be patient will be have what, patient will be have pain. And how will diagnose,
how to diagnose? UHG also will go, but important thing will go for prostate specific antigen, PSA. Normally कितना रहेगा? 4. उससे ज्यादा हो गया हमारा, नॉर्मल लेवल 4, उससे ज्यादा हो गया तो we understand will be a PSA, मतलब prostate specific antigen activated, मतलब पेशेंट है BPH. ओके, आता है which are the specific antigen will be used for prostate test. Remember, prostate specific antigen are used for the patient. Now treatment क्या करेंगे? We'll go for antibiotic, okay, drug for any infection, okay, and for enlarged prostate also we need to give some drug which will be reduce the inflammation. Okay, so all drug we can give to patient, but very important thing here, TURP, trans-urethral appropriate will be done here. So we want कि हम पेशेंट के अंदर TURP करें. क्वेश्चन आता है in which disease we go for TURP. So remember, TURP will be done in the patient with the BPH, benign posterior hypertrophy. Transurethral resection will be done in the patient on prostate. Transurethral resection of the prostate done in the patient. Okay, very important thing also, in TURP will go for bladder irrigation. Okay, याद रखना, पता होगा आपको, आई होप, ब्लैडर इरिगेशन और ब्लैडर वॉश. ब्लैडर वॉश मतलब क्या? आपने बिटाडीन के साथ आपने ब्लैडर को वॉश कर दिया. इरिगेशन मींस कंटीन्यूअस आप ब्लैडर को इरिगेट कर रहे हो, कंटीन्यूअस आप ब्लैडर को क्लीन कर रहे हो विद द आईवी सेट के साथ, एनएस के साथ क्लीन कर रहे हो. उसको बोलेंगे हम ब्लैडर इरिगेशन. सो क्वेश्चन आ सकता है बीपीएच के अंदर सर्जरी कौन सी करते हैं? टीयूआरपी. टीयूआरपी में नर्सिंग इंडक्शन क्या है? ब्लैडर इरिगेशन. ओके, आई होप वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टूड. विल बी रिमूव द टिश्यू, हम टिश्यू रिमूव करेंगे. टीयूआरपी में जो भी आपका इन्फेक्टेड पार्ट है रिमूव कर देंगे. दिस विल बी अ मोर ब्रिंग द पेशेंट. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? टीयूआरपी एंड बीपीएच. नेक्स्ट इज अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. व्हाट हैपन हियर? अ ग्रुप ऑफ disease which will be have what? Will be have a proteinuria, hypolipidemia, edema and lipidemia. The four will be have 4 thing together. There will be 4 thing together. क्या? जहां पर आपके प्रोटीन बढ़ जाए, जहां आपका एल्बुमिन डिक्रीज हो जाए, और एडिमा will be have. Then next what we have? Lipid will be increase. So ये सब मिलके क्या करने वाले हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. बहुत इंपॉर्टेंट में आता है कि what will be the causes, what are causes will be in the nephrotic syndrome. So please make sure, okay, remember the common cause in the patient in the nephrotic syndrome are the main 4: proteinuria, hypolipidemia, edema and hyperlipidemia. Which will be affect your nephron और GFR structure. आपके जो glomerular structure है वो affect करता है, इसलिए nephrotic syndrome होते हैं. Okay, most of time protein loss will be कितना होता है? More than 3.5 ग्राम पर DL ज्यादा प्रोटीन लॉस हो जाता है. कॉजेस क्या है? रीनल डिजीज, कोई किडनी आपका डिजीज हो, सम ड्रग और टॉक्सिक हो, यानी एलर्जिक प्रॉब्लम हो, और सिस्टमेटिक डिजीज लाइक मलेरिया. क्वेश्चन आता है मलेरिया डिजीज कैन कॉज व्हाट डिसकंडीशन? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, मलेरिया कैन लीड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम. मलेरिया, डायबिटीज, ओके, ल्यूकेमिया, ऑल कैन लीड टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. जो all lead to क्या करने वाले हैं? Because of all affected, they will be affect your GFR. क्या करेंगे? They affect your GFR. जो आपका ग्लोमेरुलर को क्या करेंगे? जो आपका ग्लोमेरुलर का फंक्शन है उसको अफेक्ट कर देंगे. सो क्या करेंगे? They will be here. Now सिंपल याद रखो, आपकी जो छन्नी है उसके एक पार्ट को लीक कर देंगे तो क्या होगा? प्रोटीन लीक हो जाएगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगा, एल्बुमिन निकल जाएगा तो हाइपोलिपिडीमिया हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ लिवर प्रॉब्लम, और बिकॉज़ दिस थिंग विल बी एडिमा, फ्लूइड शिफ्ट यहां से वहां हो जाएगा. सिंपल से बात करता हूं, बिकॉज़ ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या हो रहा है? आपकी जो किडनी है वो छन्नी है वो लीक हो गई है, तो क्या करेगा? वो प्रोटीन को बाहर निकाल देगा, यूरिन में एल्बुमिन को बाहर निकाल देगा, तो प्रोटीन में हाइपोलिपिडीमिया समझ में आ गया, और बिकॉज़ ऑफ द फ्लूइड शिफ्टिंग हियर टू हियर विल बी हैविंग एडिमा. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई हाइपरलिपिडीमिया? सो बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस थिंग, ये तीनों वजह से क्या? लिपिड बढ़ जाएगा, सो विल बी हैविंग हाइपरलिपिडीमिया. नाउ व्हाट सिम्पटम विल बी हैव? देयर विल बी हेमेचूरिया, cloudy urine, azotemia and uremia. Okay, will be blood will be present in the urine, will be a cloudy urine will present the patient. Okay, will be azotemia. Okay, will be absence of the urea, then will be uremia also will be there, all symptom in the present. Apart from that will be a weight gain, all symptom in the patient. Now how diagnose? We'll go for blood test. In blood test will be understand will be a WBC or RBC will be affected. Urine will be a more, when you go for urine test
we have all thing protein का also मिल जाएगा. LFT देखोगे तो will be see the less albumin. All thing will be can tell you about the what nephrotic syndrome. Now how to treat? For treatment we'll go for corticosteroids. Okay, we'll go for corticosteroid. Methyl prednisone drug will be very common, which will be stop your inflammation. Okay, it will stop inflammation of the globule जो आपके नेफ्रॉन को इन्फ्लाम करने का कंट्रोल करेगा. So nephrotic syndrome can be prevent. Okay, so we can give immunosuppressive drug also can give and diuretic also give to the patient. Okay, so about it about the nephrotic syndrome. Next we'll talk renal calculi, which I told you will take once again. Okay, what simple thing will be stone in the kidney, nephrolithosis, stone in the kidney, edema is ureter. There will be three types of stone: calcium oxalate, calcium phosphate, and uric acid. Calcium only commonly will be here. Family history, died, all things are the reason can be called kidney stone. Family history है, died में आपका अगर properly urine out will be taking more calcium. All things can lead to what? They can all can lead to the renal calculi. But dehydration also, because dehydration में क्या होने वाला है? आपका जितना यूरिन बाहर निकलना चाहिए था उतना बाहर नहीं निकल पाया. So this also can lead to renal calculi. Next thing, excessive diuretic. आपने ज्यादा डायरेक्ट यूज कर लिया है, जितना भी आपका वो था यूरिन, जितना भी यूरिन था वो पूरा बाहर निकल गया. ऑल विल बी कम आउट. सो डेपन नाउ बॉडी विल बी नॉट एबल टू, बॉडी में क्या रह गया? स्टोन रह गया, स्टोन रह गया. सो वी विल बी मेक इन द स्टोन फॉर्म. सो इट्स अबाउट द excessive diuretic. Some discondition, endocrine disease, some discondition also can lead to this problem, like what? Hyperplasia. Okay, hyperplasia is commonly be in the patient, like gout. Okay, बात कर ली थी हमने, जो बात की थी उसमें क्या होगा? इंक्रीज यूरिक एसिड. साइन सिम्टम डिपेंड करेगा, साइज कितना है उसका और डिपेंड करने वाला है. साइज पे डिपेंड करेगा. रीनल कोलिक और यूरिनरी कोलिक, किडनी पेन और ईयर साइड में पेन होने वाला है. ओके, एंड patient have very important pain. Okay, patient will be have very important pain. Patient will be have costovertebral pain, flank region पे और lumbar region पे patient को pain होने वाला. Sharp pain, stabbing pain will be have, and severe pain will be have. Now very important thing, how will diagnose? We diagnose with a KUV X-ray. Kidney blood X-ray we can diagnose with also UHG, kidney UV X-ray or UHG of KUV also will be recommended for patient. Then for that we'll see the which stone is there. On that basis we can plan treatment. We give antispasmodic, then proton inhibitors, then analgesics, antibiotic will be given to the patient, and will for cystoscopy also will tell you the stone. And if not done, we'll go for lithotomy, nephrotomy. We will go for surgery. जब क्या करेंगे? स्टोन को रिमूव कर देंगे. ओके, अब lithotomy, remove entire stone. Nephrotomy means completely remove the nephron part will be removing in the patient. Okay, this is about the renal calculi. So I hope you understood about the renal disease. So we'll see the question now. Normal serum creatinine level 0.5 to 1.1, 0.6 to 2, 0.1 to 0.6, 0.8 to 2 mg per dl. तो आई होप मैंने बात की थी पहले ही, 0.5 to 1.1 mg per dl आपका नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, stone associated with a UTI are oxide stone, mixed stone, pyritic stone या cystine stone. So will be answer is the mixed stone, because क्या कर रहे हैं? स्टोन बिकॉज यूटीआई में हो रहा है. तो अगर हम बात करें किडनी स्टोन तो उसमें क्या आएगा? ऑक्सीडेड स्टोन इज अ कॉमन आंसर, बट आपका मिक्स्ड स्टोन आपका यहाँ पर आंसर रहेगा. नेक्स्ट, कॉज ऑफ पेन इन द यूरियोलिथेसिस. ओके, मतलब आपका यूरेटर ब्लैडर में स्टोन है, उसमें क्या कॉज है पेन का? प्रेशर एक्सेसिव बाय द स्टोन, मूवमेंट ऑफ स्टोन, decrease water intake, या will we have a degeneration of the stone? The answer will be the movement of stone, because urethra में
आपका स्टोन यहां से वहां घूम रहा है। कॉमन टाइप ऑफ यूरिन स्टोन, कैल्शियम, यूरिक एसिड, आयोट्रिक, पेयोट्रिक। ओके, सो क्या आंसर इसका? आंसर विल बी द कैल्शियम। कैल्शियम विल बी द आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal pH of urine 6.5 to 8, 4 to 7, 7.35 to 7.45, 3 to 4.5। 7.35 to 7.45 तो ब्लड का है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था 6.5 to 8 हमारा नॉर्मल पीएच होता है यूरिन के अंदर। क्लिनिकल साइन ऑफ रीनल कैल्कुलाई इंक्लूड हेमेचूरिया, frequency in urination या small amount of urine। किडनी स्टोन में क्या सिम्टम रहेंगे? So all of the above are the right answer। Okay, causative factor of the nephrotic syndrome, causative factor of the nephrotic syndrome। So what is the question answer option? Aminoglycosides, diabetes mellitus, glomerulonephritis, yeah, all of the above। So actually with the all of the above। normal pH in normal urine, अगर पेशेंट का नॉर्मल पीएच है यूरिन का, यूरिन कैसा दिखेगा? स्लाइड अल्कलाइन, हाईली अल्कलाइन, स्लाइडली एसिड या हाईली एसिड। सो स्लाइडली एसिड, हमारा यूरिन थोड़ा सा एसिडिक नेचर में होता है, सो वी अंडरस्टूड बी स्लाइडली एसिड। ओके, what is meaning of anuria? Asking what is meaning of anuria? So when urine output will be less than 100 ml per day, एक दिन में आपका 100 ml से कम यूरिन निकल रहा है, उसको बोलेंगे एनुरिया। प्लीज अंडरस्टैंड, ओलिगोरिया फेज हमने बात की थी 400 ml से कम हो तब। ओके, व्हाट इज ओलिगोरिया? व्हेनेवर लेस देन 400 ml, वो आपका ओलिगोरिया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन साइन सिम्टम ऑफ द रीनल कार्सिनोमा। डायरेसिया, पेन इन द लेस इमेचुरिया, अर्जेंसी या इरेथ्रीमिया। द आंसर भी पेनलेस विद इमेचुरिया, पेन होगा नहीं और इमेचुरिया बढ़ता जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री रीनल कॉज? व्हाट इज द प्री रीनल फेलियर मीनिंग? प्री रीनल कॉज मीनिंग क्या है? interference with the renal perfusion, interference with the renal function, obstruction of the urine and all of the above। फिर पूछता हूं, what is a pre-renal failure cause? Interference with the renal perfusion, interference with the renal function, obstruction of the urine flow or all of the above। pre मतलब क्या? यूरिन आपके रीनल के पहले, तो क्या होगा? फिर ऑब्वियसली परफ्यूजन, तो रीनल परफ्यूजन में कुछ अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है। व्हाट इज इंट्रारीनल? व्हाट इज इंट्रारीनल मीनिंग? मतलब इंटरफेयर विद द रीनल फंक्शन। अगर आपका किडनी फंक्शन प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम है, तो वो इंट्रारीनल है। व्हाट इज द पोस्ट रीनल? ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, याद रखना, प्रीरीनल मतलब क्या है? विल बी हैव अ प्रॉब्लम विद परफ्यूजन। देन व्हाट इज अ इंटररीनल? मतलब जब किडनी फंक्शन प्रॉब्लम है। व्हाट इज पोस्ट? जब आपका यूरिन फ्लो आपका ऑब्स्ट्रक्टेड है। ओके, नाउ व्हिच इज द एंड स्टेज रीनल डिजीज? एंड स्टेज डिजीज कितना होगा? लेस देन 15 ml। ओके, आपका यूरिन आउटपुट हो जाएगा 50 ml विल बी हैव यूरिन आउटपुट। ओके, फ्रीक्वेंसी इन यूरिन नाइट टाइम क्या बोलेंगे उसको? नॉक्चुरिया। ओके, नॉक्चुरिया विद द आंसर फॉर दैट। सो आई होप you understood how question can ask in exam. Already we tried to cover everything, but please do study। Okay, now we'll go for next topic, oncology। We'll go for next topic is oncology। In oncology, what is oncology means? It is one branch, it is one branch of medical science which deal about study of the neoplasm। Okay, study about the neoplasm के बारे में बात करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? oncology। So what is neoplasm? It is a one abnormal mass tissue growth and excessive which uncontrolled uncontrolled mass है जो आपकी बॉडी में हो जाता है, उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। सो व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? हम बात कर रहे हैं, हम जहां पर स्टडी करेंगे नियोप्लाज्म की बात करेंगे। और नियोप्लाज्म क्या है? आपका अबनॉर्मल मास और टिश्यू ग्रोथ है जो अनकंट्रोलेबल भी है और अनकोऑर्डिनेटेड भी है।
उसको बोलते हैं न्यूप्लाज्म। दो टाइप के होते हैं कितने, बिनाइन और मेलिग्नेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट कैंसर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैंसर? कैंसर मीनिंग there will be have a the word will come from the grave word, जो आपका grave word से आया है, cha will be have something like abnormal growth will be in the cancer. Now what is carcinoma? is a two type, malignant और epithelial tissue। जो आपके malignant tissue है वो epithelial tissue में अफेक्ट कर चुका है, इसको बोलेंगे carcinoma। next we'll speak about what, hyperplasia। और hyperplasia increase of number of normal cell, increase number of normal cell in normal arrangement, इसको hyperplasia, so it's not cancers। what is hypertrophy? increase size। okay, increase size। what is atrophy? decrease size of cell after full development। okay, याद रखना, तीन चीज आता है, आधा एग्जाम है। what is hyperplasia? number of increase number of normal cell। okay, what is hypertrophy? increase size of cell। what is atrophy? decrease size of the cell। okay, next क्या है, मेटाप्लेजिया will be a changing of one type of adult into the another type। जो आपका एडल्ट टिश्यू है उसको वन टाइप से अदर टाइप में बदलता है, उसको बोलते हैं क्या, मेटाप्लेजिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट, मेटास्पेसिस मींस ट्यूमर विल बी स्प्रेडिंग समवेयर। ओके, जहां पर आपका ट्यूमर स्प्रेड कर रहा है, मींस spreading of the tumor one place to the other organ, which is the primary goal something else, और एक जगह से एक जगह फेल रहा, उसके ऊपर क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर इन आस्क इन एग्जाम व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट। once they will say you what is neoplasm is a abnormal growth, same about cancer also। what is carcinoma? is a malignant tumor of epithelial tissue। आपके जो malignant tissue है उसका आपका क्या हो गया, malignant tumor हो गया। नेक्स्ट के बाद हमने हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी और एट्रोफी। हाइपरप्लेजिया क्या है, इंक्रीज ऑफ नंबर नॉर्मल सेल, हाइपरट्रोफी इंक्रीज साइज ऑफ नॉर्मल सेल, एंड एट्रोफी इज डिक्रीज साइज ऑफ सेल। ओके, देन हमने बात किया मेटाप्लेजिया और बात किया मेटास्टेसिस। व्हाट इज मेटाप्लेजिया? इज अ चेंजिंग एडल्ट टिश्यू, वन टाइप से आपके अदर टाइप में आपका टिश्यू चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे मेटाप्लेजिया, और मेटास्टेसिस मींस स्प्रेडिंग द टिश्यू। Now next we'll discuss about the difference between benign and malignant। okay, now first feature capsule। आपका benign के अंदर कैप्सूल n कैप्सूल रहेगा और यहाँ पर आपका नोट कैप्सूल रहेगा, यहाँ पर कैप्सूल दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। ओके, रेट ऑफ ग्रोथ benign का स्लो है और malignant का रैपिड है। आपका benign के अंदर जो आपका इन्वेजन है will be have absent और will be absent रहने वाला पर्सन will be have, और benign is not a metastasis, जो स्प्रेड नहीं होता है बट will be spreading। ओके, नेक्स्ट थिंग सेकेंडरी चेंजेस लाइक हेमरेज और नेक्रोसिस आपका benign में नहीं होता है, malignant में होता है। the prognosis will be good in the benign tumor can be a recover very fast, but malignant will be a very danger to recover। recurrence of the benign tumor very rare, but malignant will be a present, will be होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो आपका न्यूक्लियोसाइटोलॉजी रेशियो है वहां आपका benign में 1:4 या 1:6 रहेगा, पर malignant में ओनली 1:1 रहेगा, तो विल बी अ मोर न्यूक्लियर, मोर डिवीजन। ओके, सो क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट malignant, so we can understand how we can write। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, द etiology। what are the etiological factor which can lead to the cancer? okay, so they are main two things, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। ओके, एक्सोजीनस एंडोजीनस। एंडोजीनस में क्या है, फैमिली हिस्ट्री है आपकी, देन क्या होने वाला है, एज है, रेसेस हैं, और जेंडर और हार्मोन्स। ओके, इफ फैमिली मेंबर हैव एनी हिस्ट्री ऑफ द कैंसर, सो दे हैव चांसेस। malignant tumor will be see most of time in the increasing age। यंग एज में आपका malignant tumor नहीं दिखना है, benign tumor दिखता है। races we can say now will be most of time liver cancer will be affected more in Africa regions। okay, so like stomach cancer more in Japan, so like will be our races wise will be have this thing। hormone or gender we can say gender are like in breast cancer will be more in the female, and in the prostate cancer or esophageal cancer are most common in the male। okay, so these are the some gender or hormones will be affected। come to the exogenous। okay,
बात करेंगे फिजिकल, सम हीट, ओके, हीट आल्सो कैन लीड टू प्रॉब्लम टू पेशेंट. सो हीट में क्या है, लाइक कैन हीट कैन लीड टू व्हाट कैंसर, कैन लीड टू स्किन कैंसर, स्क्वैमस सेल कैंसर कैन लीड टू द patient, okay, and some radiation also can lead to the cancer to the patient, okay. Skin है, radiation है, trauma है, all physical factor can lead to cancer, like trauma or like how mouth cancer or lung cancer are coming trauma, okay. Radiation cancer means like lung cancer also, like long time more radiation also can lead to the cancer. Next, now we'll speak about by chemical. In chemical, what will be have direct chemical, like direct or indirect chemical. Direct maybe have alkaline or any chemical like we have nitrogen, all this thing all can be get problem. Indirect may any indirectly suddenly transmit to the patient. Come to the biological, any bacteria, parasite, fungus, virus, all can lead to the cancer, okay. Now question can come in exam, which bacteria can cause the cancer. So helicobacter pylori bacteria cause stomach cancer, okay. Helicobacter can cause stomach cancer, and then fungi also can cause cancer to this thing. But very common virus. In virus, hepatitis B virus can cause liver cancer, okay. Hepatitis C also can cause liver cancer. Hepatitis B, C also can cause liver cancer in the patient, okay. And human papilloma virus can cause to the cervix cancer. So the very important thing which can be preventable with the while see the viruses, okay. So ये क्या हो गया हमारा एक्सट्रोजिनस एंड एंडोजिनस कॉजेस के बारे में हमने बात किया. दिस वेरी डिटेल विल बी हैव इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, ग्रेडिंग. ग्रेडिंग क्या है, वी वांट टू सी हाउ मच कैंसर विल बी हैव. सो फॉर दैट वी हैव इंपॉर्टेंट थिंग TNM classification. TNM classification: tumor, lymph node, and metastasis. What? Tumor, lymph node, and metastasis. And metastasis हम जो हमने मीनिंग में पढ़ा था. नाउ वन ऑफ स्टेजिंग, जो आपके ट्यूमर का स्प्रेडिंग कितना हुआ है, कितना साइज है, कितना स्प्रेडिंग हुआ है, कितना मैसेज हुआ है, विल बी अंडरस्टैंड बाय TNM क्लासिफिकेशन. टी में क्या आपको दिखता है, ट्यूमर का साइज, ओके. ट्यूमर का साइज आपका सेंटीमीटर क्या करता है, टी मे बी 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर से कम है, कि मोर देन थिंग. अगर आपका 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो विल बी T1. मोर देन 2 सेंटीमीटर तो T2. more than 5 सेंटीमीटर T3, more than 10 सेंटीमीटर T4, ओके. ये हमारा टी फ्लो टी का हो जाएगा. अगर आपका लीफ नो इन्वॉल्वमेंट नहीं है सो N0, इन्वॉल्वमेंट है तो L1, दो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो N2. M मतलब spreading in the area, okay. So about our TNM classification, okay. इसे रिपीट कर लेता हूं मैं. वो TNM के अंदर T will be significant tumor, N is significant lymph node, M significant metastasis. अगर आपका ट्यूमर साइज के हिसाब से वी कैन डिवाइड T1, T2, T3, T4. T1 मतलब less than 2, T2 means more than 2, T3 means more than less than 5, और T4 means more than 10, ओके. ये आपका हो गया ट्यूमर साइज के अंदर. और N के अंदर क्या है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, N0, इन्वॉल्वमेंट 1 है N1, और 2 इन्वॉल्वमेंट है तो N2. M मतलब मेटास्टेसिस. तो हर कैंसर के अंदर अलग अलग आपका TNM क्लासिफिकेशन रहेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कुछ आता है, वार्निंग साइंस, ओके. वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन. क्या है, क्वेश्चन. C means change in the bowel habits, change in the bowel habit. Most common seen in the colorectal cancer, okay. Then A means और sore throat does not heal, जो आपका sore throat है वो heal नहीं कर रहा, किसमें दिखेगा, आपका माउथ या स्किन या ऑर्गन में दिखेगा. Then U means unusual bleeding, more bleeding और discharges. कहाँ दिखने वाला है, जब ब्लैडर या वेजाइनल इन्फेक्शन हो, या प्रोस्टेट कैंसर हो, या सर्वाइकल कैंसर, उस टाइम पे आपका दिखेगा unusual discharge. T
थिकनिंग ऑफ द लंब और ब्रेस्ट, ओके ऑब्वियसली नाम लंब की बात की है तो क्या लिखिएगा ब्रेस्ट, बट उसके अलावा मेन के अंदर लंब की बात की है, सो टेस्टिकुलर कैंसर आल्सो कैन बी बाय अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंडाइजेशन, ओके, और डिस्फेजिया, सो ऑब्वियसली डाइजेशन क्या हो गया, माउथ कैंसर और स्टमक कैंसर आर द रीजन, स्टमक थ्रोट आर द कैन कॉज। Obvious change in the mole or what will be skin cancer. Then nagging or cough, so will be have a what? Will be a lung cancer or throat cancer. These are the warning sign. और क्या बोलते हैं हम? 7 warning sign also. क्या बोलते हैं हम? 7 warning sign. C, change of the bowel habits. A, a sore that not heal. U, unnecessary bleeding or discharge. T, thickening of lump or any breast. I, indigestion or dysphagia. O, obvious change in the mole, and is a nagging or cough or hoarseness of the voice. Okay, so all the these things remember, ये आपको मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर क्या क्या कैंसर हो सकते हैं। अगर पेशेंट के अंदर bowel habit प्रॉब्लम है तो obviously colorectal cancer related to the some rectal, okay, sore हिल नहीं कर रहा है तो mouth cancer are the common will be have, bleeding और discharge है तो vaginal cancer या फिर cervical cancer है chances, लंब और तो ब्रेस्ट कैंसर, लंब है तो टेस्टिकुलर कैंसर। देन आपका अगर डिस्फेजिया है तो स्टमक और थ्रोट और सिविल कैंसर के चांसेस, तो मोल हिल नहीं कर रहा स्किन कैंसर, और कफिंग है तो लंग कैंसर आर द चांसेस। नाउ हाउ टू डायग्नोज, हाउ विल डायग्नोज द पेशेंट हैव अ कैंसर? सो फॉर दैट वी हैव सर्टेन थिंग, विल गो फॉर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, विल गो फॉर रेडियोग्राफिक क्वेश्चन लाइक एक्सरे, ब्लड एग्जामिनेशन, उसमें क्या करेंगे, we'll go for routine examination, TLC, DLC, ESR, hemoglobin, LFT, RFT, all hormone level test, enzyme test, all will go for blood examination. Angiography, so angiogram, wait, okay, an angiogram will go for injection of the any radiogopic substance, like we'll use dye, जब dye यूज करते हैं ना CT स्कैन में, MRI में contrast बोलते हैं ना, contrast, so will we use this thing, and by this thing we can understand blockage, okay. Then lymph angiogram, same thing, angiogram तो ही, but will be used to understand the lymph node, कितना आपका lymphatic system में affect कर चुका है. Now we'll go for lymph node enlargement, so that time we'll go for lymph node, okay, we'll go for lymph enlargement, so that time we can understand how much lymph is affected. So lymph angiogram, see what is angiogram, we are using the radiopaque dye, so by X-ray or USG, in X-ray we get to know कि कहाँ पर आपका blockage है by dye, same thing we want to see कि कितना lymph involvement हो चुका है, so we'll go for lymph angiogram. Then cytological examination, उसमें हम pap smear और biopsy करेंगे, pap smear, biopsy और FNAC. pap smear क्या है, we'll go for the most of time the cervix cancer में जाते हैं जहां हम पेप स्मेयर करके चेक करेंगे कितना abnormal growth है. बायोप्सी में we get to know by the tissue the growth may be extensive या फिर intensive, इनके से करेंगे टोटल बायोप्सी या some biopsy can take small cell can चेक करेंगे कितना आपका ग्रोथ हो रहा है सेल का, okay. Then we'll get take FNAC, find expression कर सकते हैं, by this thing also we'll go for biopsy, okay. Then we'll go for USG. In USG we'll see the painless procedure here, so it's very important thing where we can understand the commonly we can use when patient have a obstructive problem, like a problem with the female cancer can diagnose by this thing. Apart from that we call scopy. Now so scopy will be have scopy like a gastroscopy for stomach, for colonoscopy for colon, bronchoscopy for lungs or bronchi, there will be a laryngoscopy for larynx, there will be a colposcopy for cervix or vagina, cystoscopy for urine bladder, laparoscopy for pelvis. So the all scopy, okay. So scopy will be important thing also. Which scopy will be used for that, okay. Then MRI also will be used. MRI also non-invasive. So and we can give the brief picture, okay. So we can understand where we cannot use when we are performing any pacemaker. अगर पेशेंट अंदर pacemaker है तो उस टाइम पे हम MRI नहीं कर सकते, okay. So very important thing. और पेशेंट मेरी मदर इज प्रेग्नेंट that time also we cannot go for that this thing MRI. Then mammogram is very important test for breast cancer, okay.
So here we can use by MRI also, mammograph also can use. CT scan also use the patient. Okay, will be see the cross-sectional examination of this thing, and you can see the patient. Next, barium swallow will give some barium like a radio thing. So while can understand any stomach cancer, esophageal cancer, all things we can understand by the barium swallows. Okay, so in this what tell the patient will give the barium to the patient, and will all things we can look after in the patient. Now come to the treatment. So mainly the three treatment is very important thing: surgery, radiation therapy, chemotherapy. Apart from that, will be a stem cell transplantation. All things also will be there. In surgery, we'll go for what? Diagnostic surgery, maybe curative, yeah, reconstructive. Now, how diagnostic? When we want to see cytology sample in हमको, okay, we want to see the inside the sample. That time we'll go for surgery. When we need to go for FNSC और कुछ biopsy करनी है, तो we'll go for diagnostic surgery. Okay, when we want to cure, जब को क्योर करना है, अगर प्राइमरी रीजन है या रिकंस्ट्रक्टिव रीजन है या मर्ज नहीं हुआ है, तब हम उसको करेंगे क्यूरेटिव में. और रिकंस्ट्रक्टिव में जब हमको कुछ पैलिएटिव सर्जरी करनी हो या हमको प्रिवेंशन करना है कि वो आगे स्प्रेड नहीं हो, दैट टाइम को हम एक सर्जरी कब करते हैं? जब एंड ऑफ लाइफ. नाउ कोई भी ट्रीटमेंट लास्ट में कैंसर हो, तब हम करेंगे. नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल, इंटरनल, सील्ड या अनसील्ड. ओके, now what is radiation therapy? This therapy will be used, आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं जो जाके सेल की डीएनए अफेक्ट करेगा. जो आपका कैंसर सेल है उसके डीएनए को अफेक्ट करेगा. ओके, विल बी यूज लाइक पेरियोडेक्टोमी यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम इन द लाइक लंग्स कैंसर और इसोफेजियल कैंसर में यूज करते हैं. देयर विल बी रेडिएशन लाइक एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी विल बी हाई एनर्जी रेज विल बी यूज इन द पेशेंट. ओके, like using like which CO60 will be used in the external radiation. Internal radiation will be used like in the patient will be internal way to continuous radiation required. इसके अंदर भी दो टाइप है, sealed या unsealed. Okay, ये आपके अंदर के पार्ट है, sealed या unsealed also will use. Okay, about the what radiation therapy. In next we will see about chemotherapy. Chemotherapy cell phases या non cell phases. जब आपको सेल को किल करना है तो will go for cell phases chemotherapy. Non cell means we want to damage all cell, so इसको non cell cycle phase. Okay, so ये हमारा क्या हो गया? Treatment. Now very important thing, question now, nursing care. Nursing care in the radiation therapy. So I make some short trick. PSWDN. PSWDN technique will be used in the which patient? Radiation therapy में क्या nursing care important है? P stand for psychological support. We need to give as a nurse psychological support. S stand for what? I will write here. P is a psychological support. S stand for skin preparation. Skin preparation. In skin preparation, what we require? We need to see there will be clean and dry skin. Do not wear any which will be a problem to the patient. Deodorant, powder, lotion not will be allowed. Okay, and this is very we need to prepare the skin. So question आता है, what are the nursing care in the radiation therapy? Remember PSW. P psychological preparation. Yes, the skin preparation. Okay. W means wear the shield. Now whole healthcare need to wear the shield because radiation therapy can damage to you also. D is a distance. How much distance required with the radiation therapy? याद रखना 20 feet. The nurse need to maintain 20 feet distance with the patient with the radiation therapy. Next is the N. Not allow any pregnant woman or not allow apart from the patient in the radiation therapy. So PSWDN, psychology preparation, skin preparation, wear the shield, distance, and not allow. Next come to the chemotherapy. Question बहुत ज़्यादा chemotherapy ज़्यादा question आता है. What are the responding chemotherapy? VDS, ER, ITS. VDS, ER, ITS. V means vital signs. D means dose. S means stay with patient. E means emergency equipments.
R means reaction, I means fluid intake. Okay, intake means intake fluid. Then T means blood transfusion, or we can say test. Okay, or S means special care. Okay, so we'll discuss one thing one by one. In this patient, we need to see the vital signs monitoring. So we'll see the vital signs of the patient of the chemotherapy dose. Very important thing. So we need to confirm with the dose of the patient. Next, stay with patient because chemotherapy patient will be anytime will be have a chemotherapy reaction. So we need to stay with the patient. E means emergency equipment need to ready. Any emergency condition can occur, so we need to ready the emergency equipment. Next, R, we need to understand reaction, side effect or the complication. Also, we need to monitor the side effect of the patient. Fluid intake or intake, promote at least 200 ml fluid every day, minimum 2000 ml. 2 liter of fluid need to take with the patient. How much fluid will require? 2 liter. Then come to the T, means a test. Go for test routinely before chemotherapy, or always need to go for test. Which test? CBC test, platelet test, WBC count, all need to always see the patient. S stand for special care. For what? Thrombophlebitis. Okay. Then any leukemia. So because of patient will be have a more time will be using the same line, IV line. So the all problem can occur to the patient. Okay. So thrombophlebitis, leukopenia, all things see the in the patient. So we need to understand all the special care also need to give to the patient. So it's about our normal oncology. Next time we'll see the detail in the one topic in the oncology. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, students. Students, you can leave.